Namaskar all of you. Is the voice audible? Voice clear achi? आज्ञा सर Okay. So last class रे हमें important maxims और important केतेटा concepts देखी थे जोड़ा कि evidence law रे दरकार होगा हमें ताको generally evidence law रे देखिबो. Okay. So आज में section wise again we will be starting. All of you please have your bare acts ready with you. ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମର ବେୟାର ଆକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ. ଏନିୱେ ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ଏଥିରେ. I'll put it in the screen. Okay. But ବେୟାର ଆକ୍ଟଟା ପାଖରେ ରଖିଲେ ଟିକେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହବ. ଓକେ. ତେଣୁ ଏବେ ଯୋଉ ଚ୍ୟାପ୍ଟରଟା ଆମେ ପଢିବା, ଓକେ, ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଚ୍ୟାପ୍ଟରଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଯୋଉଟା କି ମାତ୍ର ସେକ୍ସନ 1 ଆଉ 2 କଭର କରୁଛୁ. ଓକେ. ଫର୍ଷ୍ଟ ଚ୍ୟାପ୍ଟରଟା ସେଟାକୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ସର୍ଟ ଟାଇଟଲ, ଆପ୍ଲିକେସନ, କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ସେଇ ପାର୍ଟଟା ଦେଖିଲେ. ତାପରେ ଡେଫିନେସନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ସେ ଡେଫିନେସନ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ଯେତିକି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ କରୁଛୁ ସେ ଡେଫିନେସନ୍ସ ର କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କରୁଛୁ. ଠିକ ଅଛି. shall presume, may presume, ତ presumptions ଆସିଗଲା. ଓକେ. ତାପରେ prove, not proved, disproved. ଓକେ. ତ ସେଇଟା ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଲେ. ରେଲେଭେନ୍ସି, ରେଲେଭେଣ୍ଟ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ରହିଲା, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା. ଚ୍ୟାପ୍ଟର 2, ଏଟା ପାର୍ଟ 2 ର ଚ୍ୟାପ୍ଟର 2, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରେଲେଭେନ୍ସି ଅଫ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ. ଠିକ ଅଛି. ତ ତାକୁ ଆଗେ ବୁଝନ୍ତୁ ଚ୍ୟାପ୍ଟରର ମାନେ କଣ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସେକ୍ସନ ୱାଇଜ ଯିବା. ରେଲିଭେନ୍ସି ଅଫ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ. ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ର ଡେଫିନେସନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ. କିଏ କହିପାରିବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ର ଡେଫିନେସନ କଣ? What do you mean by facts? Generally, what do you understand by facts as related to your Indian Evidence Act or evidence laws or Bharatiya Sakshya Adhiniyam? What do you mean by facts? First class में discuss करते हैं. Class 1 में. Anyone who can tell me? Academic definition दरकार नहीं, working definition हेले भी चलिबो. What are facts? Anyone? Facts कौन? कौनसी जिनस जोटा किछि गोटे, ओके, आपण कौन कहि परिया ताकू एस्टाब्लिश करिया पई चेष्टा करूछंती. ओके. इधर कोटे गोटे जिनस हेछि, गोटे की गोटे जिनस हेइनी, सेटा आपण कहउछंती. जनरल भाषा रे कहया पई गले, ओके, सेटा फैक्ट जोटा आपण सेटा क्लेम करूछंती. ठीक अछि. सो कथाटा हला आपण कोर्ट सामने रे कहउछंती कि एई जिनसटा हेछि, एई जिनसटा हेइनी. ओके. So will the court entertain each and everything that you say? आपण जहा कहिबे कोर्ट सामने रे ताकू सब जिनस कोर्ट एंटरटेन करिवे ना? करिवेनी. ओके. काई करिवेनी ना? से देखिवे कि केस को को फैक्ट्स गुडा रेलेवेंट अछि. ठीक अछि. केस संगे रिलेटेड कोटा अछि, ताकू में भी से माने अलाउ करिवे. से जो अलाउ करिवे ताकू कोनती एडमिट करिवा, एडमिसिबिलिटी. तेणु एई दीटा जिनस आपणकर माइंड रे रखिबार अछि. कोन? गोटे तो हैला एडमिसिबिलिटी, ओके, आ गोटे हैला आपणकर रेलेवेंसी. आज हम रेलेवेंसी पढिया. एडमिसिबिलिटी की जेतले जीवा सेतले पढिया कोन ना, all relevant facts may not be admissible. गोटे फैक्ट अछि जोटा केस संगे कनेक्टेड, किंतु कोर्ट ताको एडमिट करना. But all admissible facts have to be relevant, obviously. हैला एटा मन रखथिबे. आ ऊपर क्वेश्चन भी पडिची, एटा हमें जेतले एडमिसिबिलिटी की जीवा सेतले डिस्कस करी. ओके. तो सेक्शन 3 की आसंता. Evidence may be given of facts in issue and relevant facts. तेणु तो दीटा जिनस सेपरेट कर देला, facts in issue आउ relevant fact. Fact in issue कोन आउ relevant fact कोन? ठीक अछि. एटा हमें कोठी देखथिलु जे फैक्ट्स को पढिथिलु.
प्लस ता डेफिनेशंस रे जो दिया हिच फैक्ट इन इश्यू कौन रेलेवेंट फैक्ट कौन ओके फैक्ट इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट सो आपनकर सेक्शन 2 ओके सबसेक्शन एफ रे फैक्ट आमे डिफाइन करथिलु ठीक अछि जी रे फैक्ट इन इश्यू आमे डिफाइन करथिलु राइट तार इलस्ट्रेशंस करिका देखथिलु राइट तापरे के रे रेलेवेंट आमे देखथिलु रेलेवेंट फैक्ट हैला तो डेफिनेशंस ऑलरेडी सेक्शन 2 रे आपण देखि दिछन एबे सेक्शन 3 रे इधर आपण फैक्ट्स इन इश्यू से थरे दे परिबे एविडेंस और रेलेवेंट फैक्ट्स से थरे दे परिबे एविडेंस बुझि परले सो कम टू द बेयर एक्ट प्रथम बेयर एक्ट थरे पढिबा तापर ताको बुझिकी तार मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस होला ता इलस्ट्रेशन उडा देखियो ओके सो एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स इन इश्यू होला सेंट्रल फैक्ट ऑफ द केस सीधा साधा भाषा रे कहले सेटा हला मुख्य फैक्ट फैक्ट इन इश्यू दैट इज द सेंट्रल फैक्ट तारी ऊपर केसटा चली सेटा प्रूफ की डिस्प्रूव हो गले आपण को केसटा ऑलमोस्ट डिसाइड हे जिवो सेटा हला फैक्ट इन इश्यू ओके मींस दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट पर्टिनेंट फैक्ट इन इश्यू रेलेवेंट फैक्ट हला सेगुडा भी related to the case may not be as important and fact in issue but they are important collateral जिनस गुडाकू सॉल्व करिया पे से माने हेल्प करि परिबे ओके तेनु एविडेंस कोर्ट जो आपण जो देबे कोर्ट रे तो से एविडेंस करिका इधर रिलेटेड थिबो फैक्ट इन इश्यू संगे किबा कोनोसी रेलेवेंट फैक्ट संगे ताले तारा एडमिसिबिलिटी रो चांस बढ़ी जो नले एमती आडू छडू जा भी आपण फैक्ट देबे कोर्ट ताको एंटरटेन करिवेन काई करिवेन काई ना सेमती भी ताकर समय बहुत कम इट विल वेस्ट टाइम इट विल वेस्ट रिसोर्सेस आडू छडू जिंस आपण कहिबे सेटा ताको पुनी एनालाइज करिया पड़िबो कोर्ट को ता ऊपर यू नो अदर साइड विल आल्सो से समथिंग तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम ओके तेनु कोर्ट जति ताको लागु कि ए जिंसडा केस संगे ओके रेलेवेंट हे पारे बट एटा एते इंपोर्टेंट नुहो ताले एडमिट न करि पारन मना कर देबे ना एटा एविडेंस का आपण दे परिबे नै मूव ऑन टू द नेक्स्ट एविडेंस बुझ परले तो कम टू द बेयर एक्ट पढंतु थरे निजे एविडेंस में बी गिवन इन सूट और प्रोसीडिंग of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others हैला पूरा क्लियर कर देला कोन ना evidence may be given in any suit or proceeding number 1 first एटा हला स्कोप कोठी यूज करा हबो एटा कोनोसी सूट रे कोनोसी प्रोसीडिंग रे of the existence or non-existence second asila section 3 रो ओके कि बेसिकली कोन जो फैक्ट्स आपण करो ओके देई परिबे आपण से जो इधर समथिंग exists or non exists एटा फैक्ट रो डेफिनेशन रे हम देखते existence or non existence of every fact in issue okay and of other facts that are there hereinafter declared to be relevant ठीक है तामने कोन एविडेंस कैन बी गिवन ओनली फॉर टू फैक्ट्स one facts in issue okay and other are relevant facts and of no others relevant fact आउ फैक्ट इन इश्यू को छाड़ी देले अन्य कोनोसी जिंस पई आपण एविडेंस प्रेजेंट करि परिबे नाही जदि भी प्रेजेंट करिवे कोर्ट ताको एक्सेप्ट करिवे नाही ओके सो दिस इज द बेसिक प्रीमाइस आरो सब पुनी डिटेल्स भी अछि जोटा आपण लिखिबे जस्ट कीप दैट इन माइंड एति की बुझी हैला एति की फर्स्ट से जा कहूची यू हैव read and you have understood okay yes or no एति की जति के बे कहली
सेक्शन 3 रो एटा बुझी हला कि नहीं जदि कोनोसी वर्ड कोनोसी कांसेप्ट आपण बुझी पारलेनी इमीडिएटली मते पचारिबे सेटा प्रथमे हम डिस्कशन ता करिबा देन यू विल राइट द नोट्स नोट्स इज इंपोर्टेंट ऑब्वियसली बट प्रथमे बुझिबे तापर लिखिबे ओके एतिकी भितर कार डाउट अछि जदि पचारंतु गिविंग यू 10 seconds okay else I will move on to the explanation नहीं समस्त क्लियर है जोड़ा मु अंडरलाइन करूची माने सेगुडा है द स्ट्रेस पॉइंट्स द इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ओके बुझी पाले नो डाउट्स एक्सप्लेनेशन गुटाले आसन एक्सप्लेनेशन काई की दिया हुए स्टैट्यूट रे कि गोटे प्रोविजन जदि दिया वाला ताको आउ टिके क्लियर करिया पई एक्सप्रेसली गोटे जिंसटे क्लियर करिया पई so these explanations and the illustrations they are very important illustration उड़ा बहुत ही important काई की illustration बहुत important illustration is very important कि आपण जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पडिबो परीक्षा रे ए illustration रो प्राय निया हो हैला so explanation को आसंतु this section shall not enable any person shall not will shall ra au may ra आमे जानतु डिफरेंट कोन shall not माने it is mandatory ଆଉ court ro discretion किछि रहुनी this section shall not enable any person to give evidence of a fact which is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure okay relating to civil procedure so disentitled to prove माने कोन ना एबे जेते लॉज अछि जे कोनोसी भी लॉ रे यदि एमती दिया हिची कि गोटे लोक ओके तार कोनोसी एंटाइटलमेंट नहीं से प्रूफ करि परिबनी ही इज बीइंग डिसेबल्ड okay that he cannot prove okay something with related to civil procedure ताले ए जो सेक्शन 3 टा ता ऊपर लागू हबनी किंबा it will not enable him if some other law civil law clearly mentions that he is disentitled or stopped okay to prove something related to civil procedure ताहले सी आउ सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम को आड नहीं की से जिनसला करि परिबन ओके सो तारो इलस्ट्रेशन रे देखिबे से गोटे एग्जांपल देछि ओके सो इट इज ओनली फॉर सिविल प्रोसीजर एटा भी से क्लियर करू एंड इट शुड बी clearly stated in provision of law okay statute रे सिबा दरकार right so now you come to the illustrations हैला illustrations से देखो A is tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death तो तारो मेंस रिया भी अछि एटी इंटेंशन अछि मारी भी ताको आ गोटे लेट्स ए बेसबॉल बैट रे ताको पिटी पिटी के से ओके मार देछ ए तो ताको तार ट्रायल एबे हो तो एई तरे फैक्ट्स इन इशू कोन हो A is beating B with the club ठीक अछि अच्छा बेसिक फैक्ट इन इशू कोन कि ए बी की मारी छि कि नहीं केमिति मारला कोन कला तार इंटेंशन कोन था एगुडा सब these all are facts in issue हैला central fact of the case or central facts of the case which if solved which if proved or disproved determines the result of the case ठीक अछि एठी जदी आपण आसंदो A is beating B with the club if that is disproved सेठी आई विटनेस अछंती सीसीटीवी कैमरा लागि कि नहीं ए तो टोटली छुईनी बी को बड़े तो दूर रे कथा सरला केस इज ओवर देयर बुझि पाछत एटा हला फैक्ट इन इशू सेकंड हला ए इज कॉजिंग बीस डेथ बाय सच बीटिंग ए जो ताको बाडे छी ओके तो सेहित पई तारो डेथ हिच राइट मे बी तारा आगु हार्ट प्रॉब्लम थिला बी रो
तो ये गोटे धक्का पकड़ा बेलू तार हार्ट अटैक हो गला ऑलरेडी हैड डाइड तापर ये जानी डेथ हो पिटी चलती डेड बॉडी की तो सेटा ऑटोप्सी रिपोर्ट रे आसीबो ऑटोप्सी रिपोर्ट कहूची कि से जो बीटिंग गुडा हेची एक्सटर्नल बीटिंग सेथ पे डेथ हेनी डेथ आगु ट्रॉमा रो हे गला हार्ट अटैक रो हे गला ठीक है सो एज causing B's death by such beating and B's intention to cause A's intention to cause B's death ये है सब central questions which if determined which if proved or which if disproved will determine the result of the case ये सब हो गला facts and issue ताले एटी से देइनी कि हमें बाहर कर दे परिया relevant facts कोन ठीक अछि तो सपोज दीदी आगु ताकर झगड़ा हेतला ए ओ बी relevant fact ठीक अछि मर्डर रो दीदी आगु ए ओ बी रो झगड़ा हेतला relevant fact झगड़ा पर गोटे दिन रे आउ गोटे ताकर कॉमन फ्रेंड अछि सी तो ए सी को कहि लोकड़ा मते एमती कहला मते बहुत खराब लागिला मते इच्छा होची बेसबॉल बैट रे काल जतो से बाहरी मते मुंडो को चेचिकी तक मार दे ठीक अछि रेलेवेंट फैक्ट ओके सी को कहउची सागो को कहउची जिंसडा गोटे दिन आगु मर्डर बुझी परले तो रेलेवेंट फैक्ट आउ फैक्ट इन इश्यू तारो डिफरेंस कोन ओके आउ जो एक्सप्लेनेशन ता देला तारो इलस्ट्रेशन से तापर देची इलस्ट्रेशन बी रे a shooter does not bring with him and have in readiness for production at the first hearing of the case a bond on which he relies okay civil suit file kरा पे सेथरा गोटे इंपोर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस हला गोटे बॉन्ड टे ठीक अछि तो से बॉन्ड ता से आनिनी आउ रेडी भी नहीं संगे संग करिया पे फर्स्ट हियरिंग रे से प्रोड्यूस करि पारुनी this section does not enable him to produce the bond or prove its content at a subsequent stage of the proceeding otherwise than in accordance with conditions prescribed under CPC तेणु आपण सेटा हमें पढ़िबा रूल्स ऑफ एविडेंस रे जहा एविडेंस आपण पाखे ऑलरेडी अछि आपण फर्स्ट इंस्टेंस रे प्रथम मौका जतले आपण को मिलुची आपण को से सब एविडेंस दबार अछि जदि दे पारनांती आपण पाखे अवेलेबल थिला subsequently normally आपण दे परिबेनी से एविडेंस without the leave of the court leave माने कोन परमिशन कोर्ट जदि परमिट करिवो जदि स्टैट्यूट रे थिबो ताले अलाउ करिवो नॉर्मली अलाउ करिवो तेणु आपण जतले फर्स्ट हियरिंग होची आपण जहा निज पाखरे सब प्रूफ अछि सब दउछ ओके ता मझे केस मझे नुवा प्रूफ आसिला सेटा परे आपण दे परिबे कहि परिबे से तळे माम पाखे नथिला एबे आसिला नुवा प्रूफ ता से हमें एड्यूस करछु त ऐड करछु बुझ पाछन तो से जिनसटा जो एक्सप्लेनेशन ता देछि तार इलस्ट्रेशन ता एठी दे तो यू टेक 2 मिनिट्स एंड फर्स्ट रीड इट एटा आगे पढंतु तापरे हम टिके किछि लेखिबा विषय कोन कोन लेखिबा ना आउ किछिटा इंपोर्टेंट जिंस एथरा अछि ओके सेक्शन 3 रो गोटे तो ऑब्वियसली द डिफरेंस बिटवीन आपणकर फैक्ट इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट से डिफरेंस हमें लिखिबा तापरे आउ भी केतेटा पॉइंट्स अछि दैट यू नीड टू राइट डाउन ओके सेगुडा मु डिक्टेट करिवि किंतु एटा प्रथमे बुझि जा फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट हैला टेक 1-2 मिनिट्स रीड इट निजे पढंतु सेते बेयर एक्ट पाखे रखिबे जो मन नुवा जॉइन करचंदी से माने इधर गोटे वर्जिन बेयर एक्ट माने कोन क्लीन बेयर एक्ट जो ते गवर्नमेंट किछ नथिबो सेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो साइट टू मिल दिबो indiacode.nic.in से उठू जाके डाउनलोड कर दियो तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हैला रे पाखे रखथिबे आ बहुत जण को हार्ड कॉपी दरकार जदि हार्ड कॉपी किनिबे ताले विथ कमेंट्स किनिबे ताले सेटा भलो जोटा देखि बहुत गुडे भलो भलो अछि बेयर एक्ट्स विथ कमेंट्स बाय वन क्लास बेले पाखे साइड रे रखथिबे सेटा आपन को सुविधा हो हैला आ एई जो पर्टिकुलर सेक्शन 3 टा में देखलु भारतीय साक्ष्य अधिनियम रे सेटा केना बहुत जण कंपैरेटिव स्टडी करिकि पढिबे बहुत जण आपन भितरु इंडियन एविडेंस एक्ट पढिछन हैला तो एटा ई सेक्शन 3 टा जोटा भारतीय साक्ष्य अधिनियम रो आर कॉरेस्पोंडिंग सेक्शन हैला सेक्शन 5
of Indian Evidence Act. Okay, तो सेटा भी माइंड रे रखिए. This is basically section 5 of Indian Evidence Act. Okay, जोटा section 3 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम. हेलो, बुझी पारले एटा एथरे कार डाउट नहीं. Okay, so सर ଆଉ प्लीज ଦିଟା एक्सप्लेनेशन रे टिके आउथरे कहि देबे कि explanation टा. अच्छा, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା explanation basically it confines itself to civil procedure only, civil cases. ठीक अछि. एबे आपन थर्सडे रु आरंभ हो सीपीसी, नेक्स्ट थर्सडे रु अभिजीत सर विल बी टेकिंग. तो सेटा सेतल देखिबे 4 टा 6 टा. ओके, तो सेतल आपन सिविल प्रोसीजर कोन, ଗୋଟେ सिविल केस कोन. ओके, केमिति ଗୋଟେ सिविल केस टे स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज रु लास्ट स्टेज पर्यंत कोन केमिति होची, रूल्स, वेरियस इंपोर्टेंट रूल्स, ऑर्डर्स से गुडा सब अपन देखिबे. तेनो एक्सप्लेनेशन पर्टिकुलरली ओके कन्फाइन्स इटसेल्फ टू सिविल केसेस ओनली, सिविल प्रोसीजर. से कहूची कि एई जो सेक्शन टा कि आपण एविडेंस देई परिबे ऑफ फैक्ट्स इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट्स, एटा काहा ऊपर एप्लीकेबल हबनी, जो लोक गोटे सिविल केस रे ओके सी डिसएंटाइटल्ड अछि प्रूफ दबार. ओके, बेस्ड ऑन सम स्टैट्यूट. जेमति कि नॉर्मली कोन हो सिविल केस रे कि आपण फर्स्ट चांस रे आपण प्रूफ टा देबे. ओके, जे आपण एविडेंस फर्स्ट चांस रे देबे. जदि एविडेंस आपण पाखरे अछि, मो पाखरे गोटे एविडेंस अछि, मु सेटा गोटे सिविल केस रे फर्स्ट चांस रे देलिनी, 3-4टा हियरिंग परे मु सेटा दबा पे चेष्टा करली, तो कोर्ट सेटा एक्सेप्ट करिवेनी अनलेस देयर इज सम स्पेसिफिक प्रोविजन इन द लॉ कि हां एटा परे देले भी कोर्ट एक्सेप्ट करिवे किंबा द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. ठीक अछि, कोर्ट सेटा जदि ताको डिस्क्रिशन रे अछि, जेमति कि एथि कोन होची, एथि शैल दे देती से शैल नॉट मींस सेठियो किछि डिस्क्रिशन. ओके, से लोक जे दबा पई चाहूची आपणकर एविडेंस आफ्टर द टाइम हैज गॉन और आफ्टर द फर्स्ट ओके चांस व्हिच वाज गिवन टू हिम. तो सेठी अनलेस एक्सेप्शंस आर देयर, अनलेस लॉ स्टेट्स दैट ओके ताको अलाउ कर देबे, कोर्ट अलाउ करि परिबे नहीं. तो सिविल जंतु एग्जांपल रे गोटे देला कि गोटे सिविल केस रे फर्स्ट हियरिंग रे बॉन्ड गोटे जण को दबार थिला. ओके, शूटर जे सूट जे यू नो फाइल करची ताको बॉन्ड दबार थिला. से बॉन्ड ता बहुत इंपोर्टेंट. से बॉन्ड दे पारलानी किंबा सिटी बॉन्ड फर्निश करियार भी व्यवस्था ता पाके नथला. ओके, तेणु सी आउ 3टा हियरिंग पर बॉन्ड ता नेकी आसी ता ऊपर रिलाय कर परिबनी. ओके, अनलेस स्पेसिफिकली इट इज प्रोवाइडेड इन द लॉ. सेटा हैला एक्सप्लेनेशन. सीधा हिसाब रे कहउ गले सिविल केसेस रे ठीक अछि, जदि someone is being precluded माने someone is being excluded okay from presenting any evidence by any provision of law, ताहले ए जो evidence may be given of facts in issue and relevant facts ता ऊपर लागू हबन. बुझि पारले? अंडरस्टूड? यस थैंक यू. राइट. तो आउ दि 3टा जिंस रिलेटेड टू सेक्शन 3 देखिबा जोटा हमर इथरे देनी. तो बहुत टाइम रे एमती हबो. ओके, तो सर जस्ट टेक डाउन सेक्शन 3. ओके, जहाँ दिया है ता विषय में किसी बेसी कहूनी. सेक्शन 3 ता छड़ा हमर जहाँ लिखिबा कथा सेटा हमें लिखिबा. पॉइंट 1 लिखंदो. admissibility of evidence, admissibility of evidence under section 3 BSA. चला एटा तो से देई छी जा, तो you just write down evidence may be given of every fact in issue, evidence may be given of fact in issue, every fact in issue, and of such other facts
and of such other facts which are एठी underline करंतु which are expressly and of such other facts which are expressly माने explicitly पूरा लिखा है जो black and white रे सेटा underline करंतु expressly declared to be relevant and of no other facts ठीक अछि सेठी हमें क्लियर कोन करूछु ना बेयर एक्ट रे हमर जोटा देइची प्रोविजन टा ओके दैट existence or non-existence of every fact in issue and such other facts okay as in hereinafter declared to be relevant okay जोटा कि declared to be relevant relevancy of facts under रे एई चैप्टर अंडर रे एक्सप्रेसली माने लेखा हिथिबो क्लियरली ओके ता छडा आउ किछि नो अलगा कोनोसी जिंस पे आपण ओके यू कैन नॉट द कोर्ट विल नॉट अलाउ यू टू गिव एविडेंस बुझि पाले सो एक्सप्रेसली declared to be relevant is important okay so लिखि दियंतु एटा को थरे कोट कहले सो एई जो कोट दिटा केस लॉ मु कहूची these are important एटा टिके अपन मन रखे पड़िबो so this is state of Maharashtra versus okay state of Maharashtra versus Kamal Ahmed Mohammad Wakil Ansari कि अपन जदि लंबा ना लागुची ताले जस्ट खाली ओके मोहम्मद वकील अंसारी एमती भी लिखि दे परिबे कमल अहमद मोहम्मद वकील अंसारी 2013 रो सुप्रीम कोर्ट केस हमारा बेसिकली साइटेशन पूरा दरकार न था ठीक अछि परंतु आर साइटेशन हैला एससीसी ठीक अछि 2013 एससीसी कोन सुप्रीम कोर्ट केस सेटा ଗୋଟେ जर्नल टे एटा लेखंतुनी ओके जानि थांतु सुप्रीम कोर्ट केसेस 2013 ओके वॉल्यूम 12 आउ पेजेस 17 सेमिति हमको परीक्षा रे लिखिया पे नथाय कि नोट्स लिखिया पे नथाय हमर खाली पार्टीज रो ना लिखिबे आउ ईयर रो जदी दे परिबे भलो काहे ना केते बेले केते टाइम रे कोन हुए सेम केस डिफरेंट ईयर रे सेम केस रो पुनी डिफरेंट आपनकर मिलिबो verdicts हरिका जजमेंट हरिका डिफरेंट ईयर जेमति कि यू नो अबाउट द जोसेफ साइन केस ओके जोसेफ साइन केस जानचंती कि नहीं एनीवन who knows or heard about the Joseph Sain case important case laws सर हरिका एडल्ट्री रिलेटेड जोटा क्वेश्चन तो हाँ जोसेफ साइन केस ओके जोटा डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्टरी आपनकर हेतिला केसटा हला 2018 रो तो द एक्चुअल जोसेफ साइन केस जेतेबेले हमें कोर्ट करूछु जोथरे लैंडमार्क जजमेंट आसिला सेटा हला 2018 ओके तापरे आसिला कोन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सेटा एडल्टरी टा आपण कहि देले सेटा दैट इज नॉट ओके क्राइम एनी मोर तो सेटा बहुत गुडे सब प्रॉब्लम्स बाहरला स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस रे आर्मी नेवी एयर फोर्स हरिका तेणु 2023 रे यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट गले सेही केस को लेके ना एथरे जो आपण जजमेंट देइचंती एटा कोन आंक ऊपर भी अप्लाई हबो ए जो आर्मी आउ यू नो डिफेंस फोर्सेस ऊपर तो सेतेबेले केसटा हे गला कोन सेम जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किंतु वर्षटा लेखुचंती 2023 सो नेम ऑफ द केस इज सेम बट मु जदि आपण कहबी व्हाट हैपेंड इन जोसेफ साइन 2023 ताले मु अलगा केस को सेही केस रो अलगा गोटे डायमेंशन विषय कहूची तेणु वर्षटा लिखिबाटा भी इंपोर्टेंट तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कमल अहमद मोहम्मद वकील अंसारी 2013 एथरे कौन ना सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर करी कहले कि जदि
इंडियन एविडेंस एक्ट रे ए टाइम रे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम नथिला एनफोर्स ही नथिला 2013 रे ओके तो जहां भी आपनकर लेखा हिची क्लियरली कि एई जिनस गुड़ा है रेलिवेंट फैक्ट केवल से ही जिनस आपण तापाई एविडेंस दे परिबे ओके डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट राइट सो एटा माइंड रे रखिबे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कमल अहमद मोहम्मद वकील अंसारी 2013 रो केस ओके अच्छा जदि एविडेंस इनएडमिसिबल हे जिवो ताले कोन हबो से केस एटा गोटे दिस इज आल्सो ए लैंडमार्क केस ए केस टा इंडिया रो पॉलिटिकल हिस्ट्री चेंज कर देला रिलेटेड टू योर इमरजेंसी ओके स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण ठीक है सो टेक डाउन नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 3 रो प्रिंसिपल रूल्स ऑफ एक्सक्लूजन हेडिंग दियंतु प्रिंसिपल रूल्स ऑफ एक्सक्लूजन principal rules of exclusion where evidence becomes inadmissible principal rules of exclusion where evidence becomes inadmissible hello एटा बहुत इंपोर्टेंट आपण एटा बुझिबे ओके फर्स्ट लिखंतु in the case in the landmark case of state of Uttar Pradesh versus Rajnarayan 1975 एटा हला आको इमरजेंसी केस भी कोन ठीक अछि आपण जानछन इमरजेंसी कहीं लागिथिला देश रे एनीवन हु कैन टेल मी इमरजेंसी एक्चुअली लागिथिला कहीं की सर वार राज पे हाँ वार पे वार पे जो गुड़ा लागिथिला से गुड़ा हला ड्यू टू यू नो वार किंबा आपणकर ओके कि कोन इन्वेड कर सर देला ताले कोन हला कोविड पैंडेमिक ताले तो नहीं नहीं सेटा नो माने इमरजेंसी माने जोटा कि इंदिरा गांधी लगैथिला जोटा ओके सेही कथा कहूची एही केस पे लागिथिला ओके तार पॉलिटिकल हिस्ट्री टा कोन ना this Raj Narayan, he was also a politician, very powerful politician in Uttar Pradesh. तो सीए प्रूव करने पे बाहरला कि जो इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी टू लोकसभा से इलेक्शन टा इन इटसेल्फ सेटा फॉल्टी अछि इनवैलिड हवा कथा आउ सेटा कोर्ट को गला कोर्ट भी ऑलमोस्ट सेटा मानि गले कि हां इनवैलिड हबो तेनु बिफोर दैट वुड हैपन कि गोटे तांको बाहर करा ही जीवो she imposed emergency okay so since the Rajnarayan case टा बहुत important है तो एटा constitution रे आपण पढिबे state of Uttar Pradesh versus Rajnarayan so in the landmark case of state of UP versus Rajnarayan in 1975 the Supreme Court elaborated the Supreme Court elaborated on the principal rules of exclusion where evidence becomes inadmissible where evidence becomes principal rules of exclusion where evidence becomes inadmissible कंटिन्यू तो सुप्रीम कोर्ट को कहले से दीटा रूल देले द प्रिंसिपल रूल ऑफ एक्सक्लूजन आर टू फोल्ड द प्रिंसिपल रूल ऑफ एक्सक्लूजन आर टू फोल्ड
कौन सेटा नंबर 1 लिखंतु फर्स्ट evidence of relevant fact is inadmissible. Evidence of relevant fact is inadmissible when bit A, theta case now, okay. Bit A, its reception offends. सर वेन Its पर कौन कहले when bit A माने A B जमती अपन लिखुचन ना तो bit A point 1 ओके when point 1 की bit A its reception offends against public policy its reception offends against public policy or B bit 2 its reception offends a particular rule of law. Its reception offends a particular rule of law. तो public policy against रे थिबो किंबा particular rule of law against रे थिबो ताहले relevant fact को नहीं कि भी evidence जदि दउचंती ताकू भी कोर्ट ओके ग्रहण करिवेनी एडमिट करिवेनी ओके कंटिन्यू तो कौन हुए ना देखंतु केते मैटर्स अछि जोठी कि आपण केते टाइप रो एविडेंस नै परिबेनी फॉर एग्जांपल समथिंग व्हिच इज अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट गोटे हाई पोजीशन रे गोटे ब्यूरोक्रेट अछंती ओके सपोज देयर इज ए स्कैंडल गोटे गोटे मतलब बोफोर स्कैंडल हेतला एंती बहुत गोटे थेतला तो सपोज सेतरे आपण गोटे स्टेट सीक्रेट जोटा कि बाहर जणा हबा कथा नुह से ऑफिसर से गोटे किछि ओथ नै चंदी ओथ ऑफ सीक्रेसी और दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ठीक अछि किंतु सेटा रेलेवेंट भी जदि से आसी कहबे हां आज्ञा एई जिंसो पई एटा हेतिला ताले बहुत जिंसो क्लियर हे जिवो किंतु देशर बहुत हार्म होबो सेत एनिमीज विल नो ए लॉट ऑफ थिंग्स ओके तेनु सेई जगह रे तांको ऑल्दो इट इज ए रेलेवेंट फैक्ट आउ सेटा एविडेंस हबा कथा किंतु कोर्ट ताकू ग्रहण करिवे ओके बिकॉज इट विल बी अगेंस्ट पर्टिकुलर रूल ऑफ लॉ कोटा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आउ जदि सेटा पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट ताहले भी हबो ताहले कंटिन्यू करंतु सम मैटर्स नेक्स्ट पॉइंट रे सेई तारी अंडर रे एटा कोन 5 मार्क क्वेश्चन की 10 मार्क क्वेश्चन आसी परियो कोन क्वेश्चन आसीबो डिस्कस द सिचुएशंस वेयर relevant evidence is inadmissible हैला एविडेंस ता अदरवाइज रेलेवेंट किंतु कोर्ट ताको एडमिट करू नांती सो कंटिन्यू नेक्स्ट पॉइंट some matters are privileged from disclosure A question टा रिपीट करियो डिस्कस द सिचुएशन वेयर क्वेश्चन ता मु देबी आपन को लिखिया पे एट द एंड ओके 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 सब बेले मन रखिवे जहां भी आपण पढुचंती जो स्टैट्यूट भी पढुचंती कॉमन क्वेश्चंस रो ठीक अछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आर द एक्सेप्शंस एक्सेप्शन क्वेश्चन उडा सबुठु इंपोर्टेंट तारी ऊपर बेसी फोकस सब बेले रखि ओके सो some matters are privileged from disclosure continue a party is sometimes estopped आगु को हमें डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल की रूल्स ऑफ एस्टॉपेल पढ़िबा जो माने डेली आंसर राइटिंग बैच माने सेटा फॉलो करचंती तो एस्टॉपेल रो क्वेश्चंस अपन को एबे जस्ट पढ़िची
केते प्रकार एस्टॉपेल अछि रूल्स कोन ओके प्रॉमिसरी एस्टॉपेल टा बहुत समय रे पड़छि बट एनीवे हमें ताको पढिनु एस्टॉपेल माने टू स्टॉप समथिंग एति खाली जस्ट ओके मन रखता टू स्टॉप समथिंग ओके व्हाट इज एग्जैक्टली एस्टॉपेल जेतरा हमें जीवा सेठी हमें ताको पढिबा एस्टॉप्ड a party is sometimes stopped from proving facts. A party is sometimes stopped from proving facts. And these facts are a party is sometimes stopped, ESTOPPED, stopped from proving facts. And these facts are therefore inadmissible. And these facts are therefore inadmissible. सर हाँ तो से जो अपन जो कहले द प्रिंसिपल रूल ऑफ एक्सक्लूजन आर टू फोल्ड अंडर नंबर 1 थिला एविडेंस ऑफ रेलेवेंट फैक्ट इज इनएडमिसिबल व्हेन इट तार सबमिट थिला इट्स रिसेप्शन ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इट्स रिसेप्शन ऑफेंस ए पर्टिकुलर रूल ऑफ लॉ तारी तापर अंडर सेकंड रे बिट चली एटा एटा तार ना 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 एटा सेकंड नो एटा से फर्स्ट ता ही चलची जो टू फोल्ड आपण लिखिले दिस इज द फर्स्ट वन सेकंड टाइम आसीनु ओके तो सेटा ओके को कहबी से फास्ट अंडर ही गुडा चलची सब राइट तारो दीटा ओके सबमिट लिखिले एबे तारो किछ गोटे एक्सप्लेनेशन हमें लिखुछु ओके से जो फर्स्ट ओके फर्स्ट रीजन पे फर्स्ट फोल्ड ओके ओके सेकंड फोल्ड को आसीनु हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु क्या कौन लिखिले स्टॉप फ्रॉम प्रूविंग फैक्ट्स एंड दीस फैक्ट्स आर देयरफॉर इनएडमिसिबल पुनी नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु सेही तारी फर्स्ट फोल्ड अंडर दे the exclusion of evidence of opinion the exclusion of evidence of opinion एटा हमें देखिबा ओपिनियन एविडेंस ओके थर्ड पार्टी ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन एडा सब पढाबा आगु the exclusion of evidence of opinion and of extrinsic evidence extrinsic कोन बाहर intrinsic भीतर ओके से हिसाब रे कहउछ the exclusion of evidence of opinion and of extrinsic evidence are the contents extrinsic evidence of the contents the exclusion of evidence of opinion and of extrinsic evidence of contents of some documents is again a rule of law एटा सुप्रीम कोर्ट रो डिसीजन रो हमें कोट करूछु जोटा राजनारायण केस रे कोआइछ बुझंतु से कोन कोच द एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओपिनियन and of extrinsic evidence of the contents of some documents is again a rule of law okay तो पर्टिकुलर लॉ रे एगुडा कुआइची कि ओपिनियन एविडेंस टा को एक्सक्लूड कर देबे ओके आउ एक्सट्रिंसिक कंटेंट ऑफ सम डॉक्यूमेंट माने गोटे डॉक्यूमेंट रो कंटेंट कोन ठीक अछि डिटेल कंटेंट कोन कि किए ताको पढिची से आसी कहूची कि ता कंटेंट एया थिला सेगुडा सब एक्सक्लूडेड रहइबो extrinsic evidence of contents of some documents is a rule of law. So if it is a rule of law, okay, so although it may be relevant for that particular okay case, but court will not admit those kind of evidence. Okay, बुझिपारले the exclusion of evidence of opinion and intrinsic evidence of content of some document is again a rule of law. Since it is there in the rule of law, it is excluded by the rule of law. जोटा अपन देखिले एटा पब्लिक पॉलिसी हे परिबो ओके ता बेसिस रे एक्सक्लूड करि हबो किंबा पर्टिकुलर रूल ऑफ लॉ सेथरे एक्सक्लूड करि हबो बुझि परछन सो एटा हला तार जो टू फोल्ड ओके प्रिंसिपल रूल्स ऑफ एक्सक्लूजन फर्स्ट प्रिंसिपल सरलाइट तापर एबे सेकंड प्रिंसिपल को आसन दीटा प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट कहले the second principle
एटा नंबर 2 ओके सेकंड लेखन सेकंड प्रिंसिपल entails that entails that entails that relevant facts are subject to recognized exceptions relevant facts are subject to recognized exceptions inadmissible relevant facts are subject to recognized exceptions inadmissible unless they are proved by the best or prescribed evidence unless they are proved by the best or the prescribed evidence unless they are proved by the best or the prescribed evidence ତେଣୁ ଯଦି clearly ଗୋଟେ exception ଦିଆ ହେଇଛି relevant facts are subject to recognized exceptions ଯଦି ସେଟା ଦିଆ ହେଇଛି then they are inadmissible okay ତ exception ର exception ବି ଦେଇଛି okay admissible କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ unless they are proved by the best evidence rule or it is the prescribed evidence you know what is prescribed evidence ସେଇ evidence ଉପରେ ହିଁ entire case ଟା ଅଛି okay you know prescribed and proscribed ठीक अछि prescribed माने कौन positive yes that is dependent on it ताको prescribed कहते आपण कहउछनी कोन मु को टेक्स्ट बुक पढिबी यूनिवर्सिटी करी करे आपण को prescribed टेक्स्ट बुक्स थाए आपण एई सब्जेक्ट ता एई टेक्स्ट बुक रु पढिबे सेटा हला prescribed means authority has okay said that you know this is the way this textbook you have to follow ei case re proscribed कोन opposite banned okay ये एई जिंसटा आपण करिवेनी आठु दूर रे रहिबे proscribed तो आपण कहबे कि ABCD organization is a terrorist organization it is a proscribed organization by the state by government of India proscribed माने मना कराई ban कराई negative sense prescribed माने सेटा करिवार अछि positive sense हैला prescribed and proscribed बुझि परले सो जदि आपण गोटे relevant ओके फैक्ट को ओके relevant evidence आपण आनुचंती evidence related to relevant fact okay or fact in issue sometimes that even will be excluded सेटा को inadmissible करा ही जिवो एई दीटा केसेस रे these are the principal rules of exclusion okay where evidence becomes inadmissible कोर्ट ताको एई जिंसो हेले ही जाय कि कोर्ट गोटे relevant गोटे you know evidence को inadmissible कर देबे evidence which is going to prove a relevant fact or fact in issue ताको inadmissible कर देबे right so एटा हला principles of rules of exclusion तो क्वेश्चन टा आपण कहउतले कोन होबो सो क्वेश्चन टा लेखन discuss the circumstances in which evidence related to fact in issue or relevant fact evidence related to fact in issue or relevant fact becomes inadmissible hello 5 marks question रे आसी पारे 10 marks रे भी आसी पारे ताटू बेसी आसीबो आउ जो माने ओएसजेएस में प्रिपेयर करचंती डिस्ट्रिक्ट जज पई
आपको 2 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन पड़े तो एटा पढ़ परियो रेलेवेंट एविडेंस केतबेले इनएडमिसिबल हबो हैला तो जस्ट किछि नहीं 4 लाइन रे आंसर सारिवार अछि the principles have been clearly laid down in the landmark case of state of UP versus Narayan 1975 the Supreme Court gave a okay twofold principal rule of exclusion first bit a bit b and second बस एतिक आउ किछ एक्सप्लेनेशन इति जा लिखा है आपण को बुझिया पे आ जदी ओजेएस रे पडिबो 10 मार्क ताले पूराटा लिखिबे हैला यदि 5 मार्क रो पडुची बस खाली से टू फोल्ड रूल्स ही लिखियारो सेतिक रे हमर हे जिवो टाइम भी हे जिवो हमर जगह भी सरतो बुझि परछन नाउ कम टू तो एथरे कोन रहला हम देखिलु गोटे जिंस हला कि फैक्ट इन इश्यू आ गोटे जिंस हला आपण को रेलेवेंट फैक्ट ओके तारो डिफरेंस ता लिखियो सो टेक डाउन डिफरेंस between fact in issue and relevant fact difference between fact in issue and relevant fact okay so जो माने जानी चंती किंबा आपण आपण बुझिले फैक्ट इन इश्यू कोन ओके सो नाउ आई गिव यू 2 minutes you think कौन कौन हे परिबो तापर जन जने कहबे देन आई विल टेल यू डिक्टेशन में करिया केतेडा डिफरेंस हे परि सो हु नो यू कैन टेल हां सेटा कोन आगुरु एटा गोटे क्लास रे लिखा हैतला ए फैक्ट एंड इश्यू रिलेवेंट फैक्टर डिस्टिंक्शन दा लिखा हैतला सर 10टा पॉइंट एटा हमें लिखि सरिजु यस सर ओके फाइन ताले ठीक अछि ताले तो सेथरु आपण देखि देबे ना व्हाई शुड बी बट सर मु एटा मोर फर्स्ट क्लास मु जानिनी कि कोन पढाई छी कोन नहीं इट्स अ बेसिक किछ सर पढाई एटा एटा मोर भी फर्स्ट आज हमें सेक्शन 3 करूछु राइट सो खाली सेक्शन 1 और 2 आउ किछटा बेसिक कांसेप्ट्स मु कहिची राइट माने मते 9टा क्लास खंडे आज आई थिंक टुडे इज 10th क्लास ओके 10th की 11th जाबी थियो से प्रथम 9टा क्लास रे मु फंडामेंटल्स ही पढौतली से 9टा क्लास बहुत इंपोर्टेंट तो सेटा आपण देखि देबे ओके आपण ऐप रे सेटा अछि जस्ट सी दैट आउ जा डाउट्स हबो एविडेंस मते एक्ट व्हाट्सएप रे ए पचार जो देबे माने भारतीय साक्ष्य अधिनियम रो आपनकर जो हां एप्लीकेशन है से 29th ना 27th जाय प्रोबेबली अपलोड हेची बाकी तक क्लासेस अपलोड हेनी एबे काली राती रे मु देखिथिली हाँ लास्ट टा थिला 27th रे लास्ट क्लास 27th रे थिला आउ काली रो थिला तो आपण को से सेटा देखि देबे 27th पर्यंत ही ओके सेई तरह ही कवर हिची जिंसोडा तो सेटा देखि देबे दैट इज 7 और 8 क्लासेस हैव गॉन आज्ञा सर हां सर सेटा जो 10टा पॉइंट जो डेफिनेशन रोल एंड प्रोसीडिंग्स नेसेसिटी फॉर प्रूफ स्टेज ऑफ डिटरमिनेशन ए ओडा तो ना अलगा किछ थी बस सेटा सेगुडा ओके जो आपण सर ताले हमरो कहउछथि गोटे क्लास रे एटा लिखा हैतले सेटा हला द पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन से डिस्टिंक्शन रे आपणकर ओके फैक्ट इन इश्यू आउ रेलेवेंट फैक्ट भितरे केतेटा आपण केतेटा पॉइंट्स दिया हैतला 10टा खने दिया हैतला 10टा सर 10टा दिया तो दैट इज 10 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन और डिस्टिंक्शन बिटवीन फैक्ट इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट ऑलरेडी हमें यदि कर देइछु देन वी डोंट हैव टू गो फॉर दैट अगेन एंड वेस्ट टाइम ओके तो सेटा देखि देबे न्यू स्टूडेंट्स जो अछंती तो सेटा टिके आपण बेसिक क्लास रो देखि देबे देखि देला परे जदि किछि डाउट्स आसले सेतरे ताले मते व्हाट्सएप रे पठे देबे मु वॉइस नोट रे आपण को पठे देबी जे आपण डाउट्स अछि ओके यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ लाइव क्लास टू आस्क योर डाउट बहुत जण ऑड टाइम्स रे भी पाठ पढुचंती राति रे ओके तो जेतोरे डाउट आसला ओटे you write if you are comfortable in writing write and send it otherwise voice note करके पठे दे ओके कहना मते भी करा एक्सप्लेन करिया पड़ियो ना कांसेप्ट सोडा तो मते लिखिबाटा टाइपिंग करिबाटा टिके डिफिकल्ट वे मु वॉइस नोट रे पठे देबी तारो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन टा तुमते आपण बुझी परिबे कदर ओके फाइन तो एटा तो कर देई चंती ताले वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट तो एटा हला कथा आपण सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम which corresponds to section 5 of Indian Evidence Act सेटा जहा लेखिले आ बेयर एक्ट जहा दिया हिची स्क्रीन रे जोटा अछि ताकू थरे पढंतु एनी पॉइंट
any concept you are unable to understand, then ask me. Take 1 minute for it. And after that, we'll go to very important section of BSA, that is section 4. आउपर बहुत थोड़ा क्वेश्चंस पड़ी आगुरु जोटा सेक्शन 6 थिला इंडियन एविडेंस एक्ट रो जो थरे आपण जानुचंती व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ रेस जेस्टा ओके सेटा जोटा सेक्शन 6 रे थिला इंडियन एविडेंस एक्ट रो एबे सेटा भारतीय साक्ष्य अधिनियम रो सेक्शन 4 रे अछि so that we will study. So 1 minute रे देखंतु any doubts, any term you are not able to understand, मु simple English रे कहूची. Okay, still then जदि किछि बेयर एक्ट रो टर्मिनोलॉजी अछि जोटा आपण बुझी पार नांते देन आस्क ओके जल्दी जल्दी यू नो कैन आई सुनतो एविडेंस एक्ट हला मदर ऑफ ऑल स्टैट्यूट्स आपण यदि एविडेंस लॉज ठीक रे बुझी नांती ताले साखीटा केमती नि होची सिविल केस रे ओके क्रिमिनल केस रे अलग जो भी टाइप रो केस हो सेटा आपण एप्रिशिएट करि परिबे नाही सेटा जदि एप्रिशिएट करि परिबेनी आपण को बुझिया पई बहुत प्रॉब्लम होबो ठीक अछि सेमती कया गले एटा बेसी तो सेक्शंस नहीं 170 सेक्शंस को 20 सेक्शंस हिसाब रे पढेले 10-12टा क्लास से सर जीवो राइट बट आमो खाली सेक्शंस देखिबार नहीं सेक्शंस अगर कांसेप्ट्स रा बहुत अछि सेगुडा देखिया पे पडियो राइट जो माने यू नो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स केते जण जो माने ऑलरेडी सारी सरचंती ओके ताहले आपण आई वुड रेकमेंड ए कोर्स ता थरे सरी सरची आर वर्ष अक्टोबर नवेम्बर रे आ तार सेतबेले तो नोट्स वोट्स अवेलेबल नथिला एबे भी भलो नोट्स भी अवेलेबल नाही बीएसए रो तो सेही नोट्स उडा आपनकर दिया हिची ऐप रे जोटा नवेम्बर बैच रो ओके से नोट्स उडा बहुत ही डिटेल्ड नोट्स उडा से थ्रू आपण देखि दे परिबे आ से थ्रू ही जो पॉइंट्स काढी के निजे बने परिबे नोट्स ओके बट लाइव क्लास रे आई विल गो स्लो ठीक अछि इफ द पेस इज एन इश्यू फॉर यू यू कैन जस्ट बिंज वॉच प्रीवियस ओके जोटा मु सारी ची ऑलरेडी बीएसए दा ओके किसी डाउट अछि सेक्शन 3 रे नो so then let us come to section 4 okay एटा important mark कर देबे come to your bare act I'll also give it in your screen relevancy of facts forming part of same transaction forming part of same transaction ठीक है तो जस्ट खाली लिखि दियो तो साइड रे रेस जेस्टा ओके जोटा की थिला तार कॉरेस्पोंडिंग सेक्शन थिला सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट ओके बिफोर आई स्टार्ट दिस दीटा टर्म आपण को कहबी गोटे हैला टेम्पोरल आ गोटे हैला स्पैटियल ठीक अछि anyone who can just tell me what is temporal and spatial especially जो माने already परिचंती क्लास temporal माने कोन temporal is related to time ठीक अछि temporal is related to time
आउ स्पेटियल इज रिलेटेड टू लोकेशन स्पेस जहाँ भी आपण कहि पारे तो टेम्पोरल एंड स्पेटियल ठीक सेमती आउ दुटा टर्म मन रखिबे ए रेस जेस्टा एंड अदर कॉन्सेप्ट्स हमरा दरकार पड़िबो टर्म पूरा प्रॉक्सिमेट और प्रॉक्सिमल एंड रिमोट ओके प्रॉक्सिमेट एंड रिमोट और प्रॉक्सिमल एंड रिमोट प्रॉक्सिमल माने पाखे पाखे प्रॉक्सिमिटी केते ठीक अछि प्रॉक्सिमिटी माने डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ठीक अछि सो प्रॉक्सिमल और प्रॉक्सिमिटी आउ गोटे हैला रिमोट प्रॉक्सिमिटी मींस वेरी क्लोज ठीक अछि सो से प्रॉक्सिमिटी और रिमोटनेस एटा हैला आपनकर स्पेटियल डायमेंशन रे आपन कहबे त माने धरंतु गोटे मर्डर हेछि हैला तो अक्यूज जे से 500 किलोमीटर दूर रे अछि सेही टाइम रे तार अलाबाई अछि तार से प्रूफ भी कर दोछ मु 500 किलोमीटर दूर रे अछि तो से तार रिमोटनेस आसी गला से एते दूर रे थिला से मर्डर टा केमति करियो निजे तो एटलीस्ट कर परिबो ओके राइट ता ऑपोजिट हैला प्रॉक्सिमेट 500 मीटर दूर रे थिला पाखा पाखी थिला ता हैला तो एई टर्म डा बुझंतु काहे ना एथरे दरकार पड़ियो तो एथरे कोन को होची रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन रेस्ट जेस्टर जोटा में कहूछु ओके the facts which though not in issue are so connected with fact in issue or relevant fact so as to form a part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times or places जदि सेम ट्रांजैक्शन रो सेगुडा पार्ट हबो ओके ताहले they will be okay relevant facts they are closely connected they are not directly facts in issue okay but they are connected okay with fact in issue or a relevant fact for example murder hitman जन को हमें गोटे हिट जॉब देइछु मिस्टर ए को असैसिनेट कर हैला रेडी की था मु फोन कले करियो मु फोन कली मारो दक मारदेला मो फोन रु तार मारिबा परियो तापर से केमती सेटू खसी गला से सबु गोटिए ट्रांजैक्शन रो पार्ट मूल यूएस रे बस से पे से लास्ट पार्ट ता देला ओके वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट प्लेसेस एटी कोन ऑलमोस्ट सेम टाइम रे हिची बट डिफरेंट प्लेसेस रे हिची आई कॉल द हिटमैन फ्रॉम लंडन हिटमैन कैरिड आउट द हिट जॉब इन इंडिया but same transaction that is the murder of that person बुझि पाले सेहि पे मु कहली प्रथमे टेम्पोरल आउ स्पेटियल डायमेंशंस कोन रहबो ओके तो एही कांसेप्ट टा को बेसिकली रेस जेस्टा बोली कोन ओके आउ आगु को जते बेले हमें एविडेंस ऑफ जनरल रूल्स अपन जानचोदी कोन टाइप्स ऑफ एविडेंस हमें पढिथिलु अपन पढिथिलु ओटे हियर से एविडेंस ठीक अछि सो हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस ताको एविडेंस हिसाब रे अपन नो नांती हियर से एविडेंस माने सुने सुनाया ठीक अछि काडू कोन सुनी कि अपन कहउछ अपन निजे देखि नांती राइट यू हैव नॉट फेल्ट इट और सेंस्ड इट थ्रू योर सेंसेस निज आखि रे देखि नांती कान रे सुन नांती स्किन रे फील कर नांती तथापि अपन को एविडेंस टा एक्सेप्टेड होउछ ओके so that is exceptions to hearsay से तरह हमें बहुत गुड़े जिनस देखा डाइंग डिक्लेरेशन ये सब जिनस अच्छी ओके दिस वन इज आल्सो देयर प्रेस जस्ट ओके सो ए कांसेप्ट ताकू कहंती रेस जेस्टा आ ए कांसेप्ट विषय किछि पढिबा केतेटा इंपोर्टेंट केस लॉस देखिबा जोटा हैला ब्रिटिश ओरिजिन रो ओके so let us first complete the bare act part एटा बुझी परले आउ थरे फेस बाय फेस कहउची तापर तारो डिटेल्ड डिक्टेशन मु कहि देबे आपन facts which though not in issue are so connected with facts in issue or a relevant fact so originally those facts are neither facts in issue nor
relevant facts, but they are closely connected either with fact in issue or with relevant fact. Okay, and they are so closely connected that they form the part of the same transaction, and since they form the part of the same transaction, they are also relevant. ठीक है, तो सेगुड़ा भी relevant है जो. Okay, how whether they have occurred at the same time and place or different times and places. एबे मु सेम जिनसटा को टिके चेंज करी कहबी हैला. मु आउ इमीडिएटली फोन करूनी, मु ताकू हिटमैन को लंडन रू फोन कली, बाबा 3 दिन परे ताकू मार दबो, से 3 दिन परे मार दबो. डिफरेंट टाइम्स मु 3 दिन आगु फोन करी कहितली, से 3 दिन परे ताकू मारला, मु लंडन रे कहितली, से इंडिया रे मारला, बट गोटिए ट्रांजैक्शन रो पार्ट. ओके, सो सेटा भी देखिबार अछि. ओके, केते डेरी हबो, टेम्पोरल डायमेंशन ता हमें देखिबा, केते पाखा पाखी की केते दूर थिबे, जोडा हमें कहलु प्रॉक्सिमेट एंड रिमोट. ओके, दोस पार्ट्स वी विल सी. एबे इलस्ट्रेशन देखो तो आपण बुझी परिबे. A is accused of murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or the bystanders, माने bystanders माने जे देखुथिले से ठिया हिथिले, ओके, आई विटनेस उडा थिले, at the beating or so shortly before or after it as to form part of transaction is relevant fact. ठीक अछि. सो ताका भीतर झगड़ा हे गला, जणे जण को बाडे देला. ओके, तो इवन आफ्टर द बीटिंग तो से आउ कोन कहि कि बाडेला पर लेट्स से ए पड़ी गला. ओके, बी पड़ी गला, सॉरी, ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ना, सो बी फेल डाउन. तो ताको मारला परे भी ए केते गुडे इंसो कहूची, ये मोर ए कर देतला, ये मोर से कर देतला. ठीक अछि. दिस इज आफ्टर यू नो पर्सन हैज बीन इज ऑन ग्राउंड प्रिज्यूम टू बी डेड. ठीक अछि. से भी सेम ट्रांजैक्शन रा पार्ट आसी शॉर्टली बिफोर और आफ्टर. ओके, तापर तो टेम्पोरल डायमेंशन ता कहला, तो एटा भी देखिबा. मु जो आपन को एग्जांपल ता देली 3 दिन आगुरु मु ताको कॉल करथिली, तो एटा रेस जेस्टर पार्ट हबो कि नहीं. ओके, विल इट बी ए पार्ट ऑफ रेस जेस्टर. 3 डेज आगुरु मु हिटमैन को फोन करी कहिथिली ताको 3 दिन परे मारो, से 3 दिन परे मार देला. ठीक अछि. तो जो 3 डेज आगुरु जो कॉलटा हितला सेटा सेम ट्रांजैक्शन रे पार्ट हबो कि नहीं, दैट यू विल आंसर मी वंस वी कंप्लीट ऑल द कॉन्सेप्ट. एटा बुझ परले. सेकंड टा देखंतु. A is accused of waging war against the government of India by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked and jails are broken open. ठीक अछि. से participate करछि, he has taken part. The occurrence of these facts is relevant as forming of general transactions, though A may not have been present at all of them. सब जिन माने पुलिस स्टेशन में निया लगे देछि, ओके, भांगी देछि बैरिकेड, सब जिन से करनी, बट सी प्रोटेस्ट चलथिला ताका संगे. जेतु प्रोटेस्ट चलथिला सी भी ओके रेस्पोंसिबल हबो. राइट. द अकरेंस ऑफ दीस फैक्ट्स इज रेलेवेंट एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जनरल ट्रांजैक्शन, दो ए मे नॉट हैव बीन प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम. सबु पुलिस स्टेशन पोड़ीबा, बैरिकेड भांगीबा, गाड़ी भांगीबा, सबु थरे प्रेजेंट न होई पारे, but he was present when that group, that mob was going to attack. से निजे अटैक न करथाय पारे, ता भीतर बाहरी गला. ओके, सो एठी बोथ टेम्पोरल और स्पैटियल दीटा जाक डायमेंशन अछि, सेही जगह रे से थिला, सेही समय रे ही हिची. ओके, तापरे थर्ड टा देखंतु. एस यूज बी फॉर लाइबल. लाइबल कोन? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज लाइबल and what is the difference between slander and libel? कहि परिए के डिफेमेशन केस देखु न देबे एते गुडे सब चलछि, राइट. स्लैंडर और लाइबल भीतर डिफरेंस कोन? लाइबल कोन सेटा मते कोंतु, तापर स्लैंडर और लाइबल भीतर डिफरेंस कोन? नुवा जो माने अछंती, जो माने जानि जंती कोंतु, जो माने जानि नांती लेखि दियंतु. स्लैंडर मीन पार्टी रे कहि कि खराब करे कहि कि जनकर डिफेम करबा, ताको स्लैंडर कहନ୍ତି. और लिबेल मीन्स जोटा रिटन हो कि माने किछि छपेकी हो कि किछि करिक हो, ताको प्रोटेस्ट करिक हो, ताको लिबेल कहନ୍ତି. ओके, आमो देश रे एई डिस्टिंक्शन टा आमो लॉ रे एते क्लियरली नाही.
जोड़ा कि अच्छी कोठी यूएस गरिकारे अच्छी आमर डिफेमेशन सब प्रकार जिनस हम राइट बट स्टिल देन जो मैंने जानना स्लैंडर कौन लेवल कौन पढ़े खाली बिफोर स्टार्टिंग द क्लास वी विल डिस्कस समथिंग ऑन दैट सो टेक डाउन लिखि दोन साइड स्लैंडर एंड लेवल एटा पढ़े और सेकेंड है से जो राजनारायण केसटा कहली सेटा पढ़े राजनारायण केसटा कौन कहीं ना बहुत गुड़े केसेस अच्छी सेगुड़ा को जानिया पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया टिके टिके जानिया पड़ो इधर पाठ पढ़ंतु माने बही रु पढ़िबे आपण और भल भल टेलीविजन सीरीज अच्छी सेटा देख पारिबे ओके भल टेलीविजन सीरीज एमती हवा कथा जोड़ा कि क्लीन अनबायस्ड थिबा दरकार अनबायस्ड माने कोनोसी साइड की फेवर करनो ना सेगुड़ा कम्युनिस्ट की लेफ्टिस्ट की जहाँ को आजिकल वोक कुआ जाउची से मानको फेवर करनो किंबा जो माने राइट विंगर्स अछंती नेशनलिस्ट अछंती हार्डलाइनर्स अछंती ओके तांको भी फेवर करनो ठीक अछि मु गोटे रेकमेंड कर परिबी आपन को प्रधानमंत्री सीरीज गोटे अछि ओके शेखर कपूर तार दीटा सीरीज अछि माने दीटा सीजन्स अछि ओके एबीपी रे सेटा बे आपण देखि परिबे ताको एबीपी प्रीमियम रे अछि बट सेटा YouTube रे फ्रीली अवेलेबल क्लास पर मु दे देबे लिंक टा सेथरे ए जो बहुत गुडे लीगल जिंस आमे पढिबा आपण हिंदू लॉ में पढुचंती ओके हिंदू लॉ रो कोडिफिकेशन काहे की हैला नेहरू चाहुथिले ऑब्वियसली बट खाली हिंदूस मान को काई कोडिफाई कर देले अलगा धर्म काई कोडिफाई करि परले ओके का को पचारी कले मेजोरिटी कोडिफाई कर देले ओके एंड कोडिफिकेशन छड़ा भी आउ भी बहुत जिंस करचंती लॉट ऑफ यू मे बी नोइंग सम ऑफ यू मे नॉट बी नोइंग और बुले देले some of you would be knowing and most of you won't be knowing that okay आपण जानछंती कि हिंदू मंदिर जते सब हमर अछि ताकू गवर्नमेंट कंट्रोल करे जो आपण खुशी रे कि हुंडी रे पके दे आछंती 500 टका 1000 टका जोदन एबे जणे टॉपर ताकर हिय रे कोथले सर मु जगन्नाथ मंदिर हुंडी रे ये करछि कि मोर फर्स्ट सैलरी टा आसीबो जोटा टोटल सैलरी टा मु दे देबी मु कहली भूल करछन तांकू दरकार नै पैसा ठीक अछि जहां को आपण दवा पे चाहते तांकू पैसा टोटली दरकार नै जहां को दरकार अछि तांकू दियंतु सेमती जदी भाबुछन ताले ब्राह्मण हाथ रे देजो ओके सी तार एटलीस्ट निजर किछि यूज करियो केना आपण हुंडी रे जो पैसा पकाउचंती सेटा मंदिर काम रे लागुची कि आउ कोट लागुची आपण जानना फॉर एग्जांपल जोटा कि आरटीआई और एबे ताका रिसेंट गवर्नमेंट जोटा क्लियर कला तिरुपति रे जो पैसा ओडा जाउथला 5-6 वर्ष आगुरु जेतले पुराना गवर्नमेंट थिला से माने कोन करथिले ताकू नॉन हिंदू रिलीजन्स रो ओके तांको पई भी यूज करूथिले ता माने पकेइचंती पैसा हिंदू माने किंतु से पैसाटा अलग धर्म रो प्रचार आ प्रसार पई यूज हैला ठीक अछि अच्छा काई केमते हैला एथिपई हैला कि से टाइम रे ऑल द टेंपल्स वर ब्रॉट अंडर एंडाउमेंट्स गोटे एंडाउमेंट कमिश्नर थिबे सबु स्टेट रे ओके तो सबु मंदिर तांको अंडर रे जेते पैसा कलेक्शन सबु से गवर्नमेंट बुझिबो तो सेइत पई एबे आस्ते आस्ते अपन देखुचंती बड़ बड़ एडवोकेट विष्णु जैन हे गले ओके तांको फादर हे गले से माने सेटा फ्री टेंपल मूवमेंट स्टार्ट करछन उत्तराखंड रे केटा हेलानी आउ केते केते जगह रे हेलानी ओके आस्ते आस्ते हबो राइट तेणु सेटा गोटे जिनस से जो मंदिर रे पैसा दउचंती आगुरु कोन होतिला राजा घरिका सेटा दउथिले मंदिर रे कोन पई काई कि ना से टेंपल वाज इन इटसेल्फ एन इकोसिस्टम जो माने पढ़ी पार नथले तांको पई गुरुकुल थिला विदाउट एनी पेमेंट से मन जाई सेठी पाठ पढुथिले तांको खाया पे दिया होतला जोटा आपण मिड डे मील स्कीम एबे करथुले बट सिस्टमैटिकली ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड इट से माने मिशनरीज के आनी की पसेले मिशनरीज सेम काम कले ओके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलिले सेथरे से माने ऑल फैसिलिटीज देले किंतु जो गुरुकुल सिस्टम ता थिला ताकू से माने चिपिकी रखिले ताको आगुरु जते बेले हमर मेडिवल इंडिया रे जते इस्लामिक रूलर्स माने असले से माने से कले ओके इंडिपेंडेंट इंडिया रे भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन जते आपण पढिबे ओके तो सेथरे भी बहुत बड़े जिंस करा हैला जोटा कि से गुरुकुल सिस्टम टा को चिपी देला ओके से जो टेंपल इकोसिस्टम टा को चिपी देला बट अदर रिलीजन्स वर नॉट टच्ड इफ यू आर सेइंग दैट योर कंट्री इज सेकुलर तमे सब धर्म को इक्वली आपण
ट्रीट करेंगे जमी फ्रांस ट्रीट कर ओके बट एठी तो जिनसा अलग ही गला हिंदू कोड बिल आसीगला तो एपटे आप कौन कले ना हिंदू कैन नॉट मैरी मोर देन वंस ओके गोटे तार लिविंग स्पाउस हे पारिबो मैक्सिमम ठीक अच्छे अलग रिलीजन्स से रखिले तेणु डेमोग्राफिक चेंज भी गला ओके तापर डेमोग्राफिक चेंज को जगह सब होती बॉर्डर एरियाज रे काली गोटे युद्ध हम सेपटे आसाम एपटे राजस्थान एपटे आमर वेस्ट बेंगल ओडिशा भी एमती ओडिशा रे भी बहुत भल सिचुएशन बोली कहि परिबेनी स्पेशली जो माने आपण बालेश्वर हे गला जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा सेपटे रहउचंती तो आपण सिचुएशन देखुचंती एते दूर भी जिबा दरकार नहीं भुवनेश्वर सेंट्रल भुवनेश्वर शहीद नगर रे ओके केती कोन को माने अछंती को प्राइम जगह से माने धरिकी बसचंती आउ केते केते जगह तो गवर्नमेंट पट्टा भी दे देछि ओके आधार कार्ड भी गलान तो ताकू एबे आउ से माने इंडियंस नो बाहर आछन ओके सो वोट बैंक पई कोन कोन कराई थी आउ सेगुडा आगु को जाई कि हम सोसाइटी को कोन करिवो सेटा हमकु देखिया पे पड़िबो आखि तो बंद करके हाथ धरिकी तो बसी हबनी बट एनीवे आर सब सूत्र आपण सेठू पाई जिवे मो बेसी डिटेल रे कहूनी सेटा निजे देखिबे तो प्रधानमंत्री सीरीज टा आपण को डिटेल्स रे जणा पड़िबो गोटे जिंस हला सत्यटा सब बेले सत्य आपण ताकू आउ जणे काहू खराब लागि बोली सत्यटा को कहिबेनी सेटा भूल जिंस ओके सत्यटा एतले आपण यदि आखि बंद कर देबे सेमती मूसा आखि बंद कर दो भाबियो कि बिलेई नाही बट तार फेट ता से ही हबो बिलेई तो सामने रे बस ओके सी आखि बंद कर देबे सिचुएशन चेंज हो जिवो सर जदि मंदिरटा जदि स्टेट गवर्नमेंट अंडर रे जाउची ताहले माने जो मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन हेइचने से माने तो मानु नाहंती गवर्नमेंट को तांकर अलगा रूल रेगुलेशन अछि से माने किछि करू नाहंती गवर्नमेंट जहां मंदिर को चलया पई ओके सेटा हम सब पढिबे आपण हिंदू ल रे जो टेंपल टा गवर्नमेंट अंडर रे अछि सेटा कोन ता फाइनेंसेस गुडा ता डेली रिचुअल सेटा गवर्नमेंट डिटरमाइन करेनी ओके बट मेजर थिंग तो फाइनेंस ना ओडिसा रे एते न हेई पारे ओके काहे ना एठी लोक माने सेटा बहुत देखंती सेटा आ जदी आपण आडू साडू किछि सेमति करिवे ताले आपण जते वर्ष भी सरकार रे थांतु लोकन को एतरे जणा पड़ला कि आपण तांका आराध्यक संगे या करचंती विगत एतिक वर्ष हैला ताले से आपण को आपण जते पावरफुल हेतांतु से आपण को माने ठीक पोजीशन को आन देबे बट सब राज्य रे सेमति होनी ना टेक फॉर एग्जांपल तमिलनाडु तांकर सेठी जो देवस्नानम जहाँ भी से बोर्ड केरला रो देवस्नानम बोर्ड है से माने कंप्लीटली जो मंदिर पैसाटा नौचंती सेटा मंदिर उपरे पूजक उपरे ता उपरे टोटली स्पेंडिंग करनांती तेन अलग जगह तो स्पेंड करछन बहुत पैसा आछुं से ओके तो सेथि पई एंड दिस इज ओनली फॉर द हिंदू टेंपल not for mosques for the Muslims not for the churches okay for the Christians तांकर सेगुरा से माने निजे मैनेज करछंती तो सेथरे जतरे पैसाटा आछुची से माने सेथरे स्कूल चंती जो माने पुअर अछंती ताको से माने खाया पई आ ताको एजुकेशन एगुडा दउचंती राइट लोक को कोन दरकार ताको बेसिक जिंस ओडा दरकार लाइफ रे तो तार जहा को बेसिक जिंस होय मिलुनी तार धर्म संगे किछि काम ही नै सपोज आपण मते अप्रोच करछन मो पाई किछि भी नै माने मोर आउ माने एमती अवस्था रे मो अछि कि आगु को मु ए अभी माने भाभी परिनी मो पिला माने कोन पढिबे यू अप्रोच मी एंड से दैट हम तो खाया पिया पे दबु सब दबु तो पिला माने भलो कन्वेंट स्कूल रे पढिबे सब हम अरेंज कर दउ ओके तो आपण जा कहि मु करबी ओके इफ यू से दैट द सन राइजेस इन द वेस्ट मते किछि फरक पड़न मते खाया पे मिलला मो पिला मानु को एजुकेशन मिलला एई जिंसटा टेंपल इकोसिस्टम रे अगर होतिला सेटा आपण बंद करे देले ठीक अछि by taking the administration of the temple in your hands right but other religions सेटा करूचंती ओके सो बहुत जगह कन्वर्शंस हैला एबे भी होउची ओके बट एबे ठीक अछि यू नो थिंग्स आर देयर बहुत गुड जगह रे लॉ फॉ ही जाईची कन्वर्शन टा हमरो किछि असुविधा नै बट कन्वर्शन बाय इंड्यूसमेंट और कन्वर्शन बाय फोर्स सेगुडा भूल तो एटा कोन दिस इज कन्वर्शन बाय इंड्यूसमेंट और सेटा गवर्नमेंट रो भी भूल कि आपण गोटे माने टोटली आपण से टेंपल्स माने पाखरे पैसा ही रखु नांती ओके तो से माने ई सब काम केमती करिवे जो जदि आपण टेंपल्स को फ्री कर देबे ताले से माने एगुडा कर परिबे बहुत जगह सेटा होउची आ कोर्ट पाकू भी जिंस ओडा गलानी ओके मु काई एते जिंस कहली कथाडा हला लीगल हिस्ट्री को जानिया पई ता सहित एसोसिएटेड पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानिया पड़िबो
without knowing the political history, it is very difficult to appreciate the legal history. And as students of law, you should have the spine to ask questions. एटा ए समय हेला एटा भूल हेला ओके आगु को हबा कथा नुह राइट फॉर एग्जांपल एबे वकफ बिल अछि तो पास हेला राज्यसभा रे काली डू यू नो द बेसिक प्रीमाइस जोटा तांकर सेक्शन 40 रे थिला कोन ना वकफ बोर्ड जो जगह को कहबो एटा वकफ लैंड सेटा हे जिवो मतलब इट्स लाइक ताको मु जनरल पैरेलेंस रे कहबे आपण बे जिबे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को कहबे ए लैंड ता मोर ठीक अछि 1000 वर्ष आगु एटा मो फैमिली अंडर रे थिला गवर्नमेंट ताको जबरदस्ती नै जाई छि एटा मोर लैंड इट इज हे जिवो कि लैंड ता आपणकर किछि टाइटल रो डॉक्यूमेंट्स नै किछि नै ओके तो सेटा सेई टाइप रो थिला जोटा सेतगळ गवर्नमेंट जो कौन से कारण जो से माने करथिले एमितिया लॉ साउदी अरेबिया और ईरान रे भी नहीं जोटा कि सुन्नी और शिया इस्लाम रो सबुठु बड़ आपण कहि परिबे अथॉरिटीज तांको देश रे भी ए टाइप रो लॉ नहीं ठीक अछि ट्रिपल तलाक तांको देश रे नहीं हमर भी हटि जाई ओके सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इफ यू आर अ सेक्युलर कंट्री रूल्स हैव टू बी अप्लाइड टू all the religions in the same way. All the religions with a majority community be included. ठीक है तो 1947 रु 2000 पर्यंत 2014 पर्यंत यदि कौन कौन हेची हिंदू मानक संगे ओके जो गवर्नमेंट छुड़ा करचंती जदि मु ता ऊपर आपन को लेक्चर दबा आरंभ करिवि कंटिन्यूअसली 2-3 दिन लागि जिवो किंतु फैक्ट्स उड़ा सॉरी बनी एटा फैक्ट्स एटा किछि आमे माने रागी की कहनु कि किछि कोन दिस सिंपल फैक्ट्स टेक फॉर एग्जांपल एंटी सिख राइट्स के तळे हितिला जेतळे इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हेतिला 1983-84 ठीक अछि कन्विक्शन एबे होछ प्रूफ आनी कि एबे दिया होछ केते बड़ बड़ लोक कन्विक्टेड हेले एई लास्ट 3-4 वर्ष रे मोदी गवर्नमेंट कले ठीक अछि जहारो जहाटा क्रेडिट सेटा ताको दबार अछि कहीं आगुरु तो एते गवर्नमेंट से कि तो किछ कर परलेनी ए गवर्नमेंट तो कर देला ना से एते पुराना केस को रीओपन करके से माने कले सेम जिंस से माने ट्राई कले कश्मीरी पंडित्स को संगे जहा जहा हितला कश्मीर रे तांको पे भी करिया बे ठीक अछि कश्मीरी पंडित्स को प्रॉब्लम के तळे स्टार्ट हैला 1989 1991 एडा के तळे हितला 1984 सुप्रीम कोर्ट को एटले केस गला सुप्रीम कोर्ट कहले ये बहुत डेरी हो गलानी ओके पर्टिकुलर केस कथा मु कहूँ तेणु एठी आउ किछि करि हबो से एंटरटेन कले ठीक अछि गवर्नमेंट तार हजार बाट अछि तो जो लोक ओपनली कहउतला मु एतिकी 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 लोक को मारथिली जे कि मो सांग माने थिले से ओपनली से कहउछि सेटा ओके तापरे रिट्रैक्ट करि गला बट नथिंग हैपेंड से लोक बुलुछि बे बारे किंतु तांकर जे मास्टर माइंड थिले फॉर एग्जांपल जो गोटे लोकर नाम कहबी यासीन मलिक अपन जे जानना देखिए से किए एयरफोर्स ऑफिसर्स माने ठिया आइतिले बस दरिया पे हठात कि नहीं के जन आसिले गुडी चलेले से हमर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स ओके स्टाफ आउट जनरल पब्लिक वेर किल्ड आउ ए बाबू इट इज जनरली सेड दैट सीता भीतर थिले से भी मानि थिला सेटा परे आउ मानलानी गोटे पॉलिटिक्स रे बड़ ना गोटे हे गला सेठी एबे जेल रे अछि एंड गवर्नमेंट हैज इंश्योर्ड दैट से जेल रे ही रहिबो ओके तार जहा व्यवस्था से जेल रे ही हबो लास्ट पर्यंत ता अगेंस्ट केस भी चली पर था चालू छि केतेटा बट द थिंग इज दैट बोथ केसेस से सुप्रीम कोर्ट मना कर दो ओके 1989-90 केस रो बट 1984 केसेस रो जिनसटा हो जा हबा कथा जत्ते केसेस अछि जोटी इनजस्टिस हेछि जस्टिस हबा कथा हला एटा गोटे एग्जांपल तो एनीवे मैं एठी स्टॉप करछि काहे कि ना दिस इज अ वेरी इमोशनल इशू ओके एंड द टॉपिक ऑफ माय पीएचडी थीसिस ओके इंडियन जुडिशियरी एंड हिंदू राइट्स मु जतले केते गोटे यूनिवर्सिटीज रे जाई कि प्रेजेंट कली मते गाइड ही मिललेनी ठीक अछि केना एथे के हाथ लगाया पे जानतनी ए सब्जेक्ट ऊपर बट इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स इट इज बेस्ड ऑन ट्रुथ ठीक अछि जोटा सत्य सेटा से जहा को जते खराब लागु जा भी लागु सत्यटा एक्सेप्ट करिया पे पड़ी ओके सो नाउ समवन हैज एक्सेप्टेड इट जे कि बहुत गोटे बड़ यूनिवर्सिटी रो गाइड अछंती
ओके बट से कहि डिस्क्लोज न करबा पे सेटा कहि सो मो सेटा को ये करू ओके माने गोटे स्टूडेंट को आपण नहीं पारिबेनी कहीं ना तार पीएचडी थीसिस टा हैला कि इंडिपेंडेंट इंडिया रे जुडिशियरी हिंदू राइट संगे केमती डील करछि दैट इज सच ए कंट्रोवर्शियल टॉपिक ओके बट एनीवे छाड़ନ୍ତୁ सेटा गोटे कंप्लीटली डिफरेंट जिंस बुझी पाले तो तेणु मो कहया कथा से प्रधानमंत्री सीरीज टा देखिबे देन यू विल नो सर्टेन थिंग्स आ निजे तापरे आपण ओके एनालाइज करि परिबे कोठी कोन जिंस सब हिच बिकॉज विदाउट नोइंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री you can never appreciate the judicial history okay tapare next c question to so libel of slander katha kohutili s use b for a libel contained in a letter forming part of correspondence letter between the parties relating to subject out of which the libel arose and forming part of the correspondence in which it is contained are relevant facts though they do not contain the libel itself mane starting रूम चिठीटा गोटे पठेली ओके तो आपको पचारली कि तार पार्टी की पचारली कि मतलब जिनस किणवार अच्छी मत कोटेशन टा पठाते पठेले कोटेशन टा चिठी रे ओके तापर मु आ गोटे कोन लिखि पठेली से लिखि पठेली तापर थर्ड कम्युनिकेशन मो साइड जोटा हैला थर्ड टाइम मु लिखि दी सेठी मु टिके ताको नारे आउटसाइड लिखि देली आपण डिसऑनेस्ट आपण एस सब लिखि देली तो फर्स्ट लेटर रो लास्ट लेटर से सब गोटे ट्रांजैक्शन पार्ट रही ठीक है तो सेटा भी रेलेवेंट प्रूफ रहइबो कोर्ट विल एक्सेप्ट ओके ऑल्दो फर्स्ट लेटर रे मोर सेकंड लेटर रे लाइबल रो किछि नथिला सर फोर्थ पॉइंट द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वेर डिलीवर्ड टू ए द गुड्स वेर डिलीवर्ड टू सेवरल इमीडिएट पर्सन्स सक्सेसिवली ईच डिलीवरी इज अ रेलेवेंट फैक्ट राइट सो एड़ा तारा इलस्ट्रेशंस देला whether certain goods ordered from B were delivered to A. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Okay, so B2 आसिला B1 को गला B2 को गला B3 की गला B4 को गला तापर A को गला. So each delivery कि B A को पठेइतिला प्रथमे B1 ला B1 B2 को देछि B1 भी एग्री करछि B2 भी एग्री करछि B तो लास्ट रे आसिला B3 A को देला B3 भी एग्री करछि तापर से A एग्री करछि नै से all these are connected ए सब गुडा relevant facts सब ओके बुझि पारले so this is the concept of res gesta so सेटा टिके हम लेखिबा what is res gesta okay एटा टिके देखि दियंतु okay I'll take a break for 5 minutes and then I'll give you the dictation for res gesta रो प्रिंसिपल्स किछिटा भी देखिया पड़िबो ता हिस्ट्री भी टिके देखिया पड़े कोठु कोन सेटा अनाई छै ओके आउ टिके केस लॉ दी तीनटा देखिबा जोटा कि इंग्लिश केस लॉ ओके रेस रजिस्टर तापर हम इंडियन केस लॉ भी देखिबा ओके सो प्लीज you go through this part then we will write something about the concept of res resister okay I'll just take a break for 5 minutes
Okay, any doubts? Any doubts ଅଛି ଆ ଭିତରେ? So now let us come to the concept of res gesta. ठीक ଅଛି, जोटा कि आपनकर entailed अछि एई particular section 4 of BSc जोटा section 6 थिला Indian Evidence Act रे. So now take down res gesta. Okay, so first ता माने टा कोन? Anyone who can tell me? Res gesta obviously सेटा तो आपनकर लैटिन रू ही आसीथिबो. तो of कोन the ता same माने टा कोन? transaction. Yeah, so take down first origin in English law. Origin in English law. ठीक अछि, English law रे तार origin ता विषय गोटे लाइन लिख दियंतु. The term res gesta means things done, means things done okay. Next point, first used in English legal system in late 17th century. Sir, first, First used in English legal system in late 17th century. हेलो 1693 रे प्रथम केस रे से माने यूज करथिले सेट. So late 17th century. In the case of Thompson versus in the case of Thompson versus Trevanian. Sixteen 93 रो केसटा Thompson versus Trevanian. Okay. तापर नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु. अच्छा इंडिया रे हमें केतବେଳେ ताकू ओके इनकॉर्पोरेट कलु. तो ओरिजिनल रे इंडियन एविडेंस एक्ट रे थिला सेक्शन 6 रे. ठीक अछि. नेक्स्ट पॉइंट, influenced by the English law, influenced by the English law, comma, incorporated in section 6 of IEA. Incorporated in section 6 of IEA. ओके, तापर लिखंतु जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट एटा तो हैला तार ओरिजिन. ओके, हिस्ट्री ता ऊपर गोटे जस्ट जानिया कथा किछ. कैरेक्टरिस्टिक्स रेस जेस्टर कॉन्सेप्ट एज ए कॉन्सेप्ट रेस जेस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन. ओके, तो नंबर 1 तो हेडिंग दियंतु कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस जेस्टर.
नंबर 1 स्पॉन्टेनिटी ओके स्पॉन्टेनियस हवा कथा सेटा राइट तो फर्स्ट आपण लिखंतु स्पॉन्टेनिटी ओके स्पॉन्टेनिटी सो तदर लिखंतु स्टेटमेंट्स मस्ट बी मेड instinctively ओके भाबी चिंती कि नुह instinctively immediately okay statements must be made instinctively without premeditation statements must be made instinctively without premeditation premeditation माने आगुरु भाबी के रखिथिबा एमती हबो तापर मु एमती चिलेबी या करी से करी ओके ताले रेस्ट टेस्टर पार्ट हबो it will not be resist statements must be made instinctively without premeditation immediately following the event immediately following the event so these examples naba examples indian examples naba famous case अछि रतन सिंह रो जोडा आपण आउथरे पढिबे डाइंग डिक्लेरेशन okay so in Ratan Singh versus state of Himachal Pradesh 1997 in Ratan Singh versus state of Himachal Pradesh 1997 the Supreme Court admitted a dying declaration made by the victim spontaneously made by the victim spontaneously and immediately after the incident spontaneously or immediately dita underline kari spontaneously made by the victim spontaneously and immediately after the incident underline spontaneously and immediately आंसर राइटिंग कला बेले एटा बहुत इंपोर्टेंट आपण खाली पॉइंट से भी लिखंतु जदि खाली लिखि लिखि चलिबे तो यू नो अंडरलाइन कर देले टिके बेटर आखिटा पडिबो इवैल्यूएटर रो जो जगहटा आपण चाहउछन ताको देखिया ओके तापर नेक्स्ट पॉइंट तर काहे ना एटा हमें डिराइव करछु कोठु दिस वी हैव डिराइव फ्रॉम द इंग्लिश लॉज इंग्लैंड रो तो तांकर भी गोटे लैंडमार्क केस दबा नेक्स्ट पॉइंट in R versus Andrews in R versus Andrews in R versus Andrews 1987 ro case study the court emphasized that statements made under the stress of excitement statements made under the stress of excitement statements made under the stress of excitement caused by an event are admissible सर एक्साइटमेंट पर कोन कहले caused by an event are admissible due to their spontaneous nature are admissible due to their spontaneous nature सेठी भाबियार किछि टाइम नै ना फटाक किनी हबो आपण इमीडिएटली कोन कहबे ठीक अछि दैट इज आर वर्सेस एंड्रूज आर लेखुछंती व्हाट इज आर जो मन को कहिछि आगुरु एनीवन हु कैन टेल व्हाट इज आर आर वर्सेस एंड्रूज देखिले आकु जे में आर वर्सेस ब्रीडिंग फील्ड देखिबा एंती बहुत बडे केसेस हम देखिबा आर वर्सेस
ओके someone आर कौन जमती आम कहूँ एटा इंग्लिश लॉ ठीक अच्छे तो आउ कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो मैंने रानी को किंबा इंग्लैंड रो हेड को मोनार्क को तांकर स्टेट रो हेड मानती जमती ऑस्ट्रेलिया हो गला न्यूजीलैंड हो गला ठीक अच्छे से हेड ऑफ द स्टेट इज द क्वीन और किंग ये भी तो आम रिपब्लिक आमर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अच्छा तो आम सेमती से गुड़ा मानुन आम ऑल्दो वी आर ए पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ ओके सो R means Rex or Regina. Okay, which is basically the Latin terms for or the king ପାଇଁ Rex ଆଉ queen ପାଇଁ Regina. એટલે Queen Elizabeth ଥିଲେ କି ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ତ R ସେଠି Regina କୁହାଯିବ. એટલે king ଜଣେ କିଏ ଥିବେ ତାହେଲେ Rex କୁହାଯିବ. So Rex and Regina. Okay, so R versus Andrews. The court emphasized that statement made under stress of excitement caused by an event are admissible due to their spontaneous nature. ହେଲା এটা ফার্স্ট হলা सर फर्स्ट जो केस लॉ टा कहले तार नाटा आउथरे प्लीज कहि देबे कोटा आर वर्सेस एंड्रयूज नहीं आर वर्सेस एंट्री रो पूर्व रो गोटे केस लॉ रो ना इंडियन केस लॉटा सेटा 1997 रो रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एटा लैंडमार्क डिसीजन कोथरे थिला ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और डाइंग डिक्लेरेशन ऊपर केसटा थिला इट्स अ लैंडमार्क केस ओके रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1997 देखिले आज्ञा 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 तापर नेक्स्ट हला कंटेम्पोरानिटी ओके कंटेम्पोरानिटी कंटेम्पोरानिटी कंटेम्पोरारी माने कौन सेही टाइम रे ठीक अच्छे तो ऑफ द सेम पीरियड ठीक अच्छे आप कहते अमुक राजा खारवेल कंटेम्पोरारी थे माने खारवेल जो रूल करते बंची से टाइम रे राजा मानकर भी टाइम थिला ओके सो लिखंतु द स्टेटमेंट और एक्ट मस्ट अकर साइमल्टेनियसली the statement or act must occur simultaneously with the event or within a very short time frame. The statement or act must occur simultaneously with the event or within a very short time frame. Very short time frame. Okay. Number 3, direct association with the event. Third है direct association with the event. So it must be directly linked to the event in question. Okay, so direct association रहबा कथा. तापर नंबर 4 लिखंतु lack of opportunity for fabrication. एगुड़ा आपण निजे तापर लिख पारे. lack of opportunity माने एते समय मिलुची कि मु भाबी परिबी ता भितर मु या कहबी से कहबी ताले सेटा रेजिस्टर अंडर रे जीवनी. There should not be any opportunity for fabrication. एते समय नथिबो कि जडे भाबी कि ओके से टाइम रे किछि गोटे कहबो जहाँ हबो स्पॉन्टेनियसली हबो ओके से जो जिनसटा होउची ताकू देखि कि से स्पॉन्टेनियसली कहबो. लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर फैब्रिकेशन हैला. नेक्स्ट सेटा देखो
lack of opportunity for fabrication. ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम किछि आपनकर रहबा कथा नै। तापरे नंबर 5 इमोशनल ओवरपावरिंग। ओके, तो जदि गोटे स्टेटमेंट दिया होची आ सेतबेले लोकटा इमोशनली ओवरपावर्ड अछि, ठीक अछि, तो ताले से किछि प्लानिंग करि परिबनी, से तो इमोशन हिसाब रे जीवो, माने से जा सत सेटा ही कहबो, स्पॉन्टेनियसली कहबो। जोटी बुद्धिर कथाटा आसे, ओके, सेही जगह रे आपण मैनिपुलेशन कर परिबे। सो इमोशनल ओवरपावरिंग। तेणु एमिति गोटे स्टेट रे जदि से थिबो, गोटे डिस्टर्बिंग इवेंट कि गोटे पूरा शॉकिंग इवेंट हेची, ओके, तो सी इमोशनली, ओके, मैनिपुलेशन करिवार अवस्था रे नथिबो, ताहेले से जहाँ भी से कहूची स्टेटमेंट से दउची से गुडा रिलायबल। तो इमोशनल ओवरपावरिंग लेखंतु सेतरे स्टेटमेंट्स मेड अंडर द इन्फ्लुएंस emotional overpowering. Statements made under the influence of an emotionally overpowering event, of an emotionally overpowering event, emotionally overpowering event are considered reliable, are considered reliable. ओके, तापर नंबर 6 लिखंतु इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो से स्टेटमेंट टा हो सेटा गोटे इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन हवा कथा। ओके, कहीं ना से बिना से स्टेटमेंट कंप्लीट ट्रांजैक्शन टा आपण जान परियन। तेणु मु 3 दिन अगरु फोन करथिली, कहिथिली ताको मार दबो 3 दिन परे, 3 दिन परे ताको मार देले, ठीक अछि। मो स्टेटमेंट टा जदी पढ़ा ही गला एविडेंस रु, ओके, ताहले सेटा आपण कंप्लीट जिंसटा बुझी परिबेनी। ओके, ऑल्दो 3 दिन अगरु कोइ इमीडिएटली बिफोर की आफ्टर नो, इमीडिएटली बिफोर की आफ्टर 3 दिन अगरु कोइ। सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। So to understand the event totally, that particular statement is required. Without that, आपण जान परिबे। ओके, तापरे नेक्स्ट involuntary utterances, involuntary utterances। इनवॉलंटरी अटरेंसेस कोन माने सेटा वॉलंटरी माने से निज इच्छा रे कहूची। इनवॉलंटरी अटरेंसेस माने ओके, एते से संगे संग और शीघ्र, ओके, भाभी चिंती न भाभी चिंती कि से कहूची। ओके, इनवॉलंटरी, राइट, मीन्स गोटे रिफ्लेक्स एक्शन टाइप रो। आपण कोन गोटे साप को देखिले ऑटोमेटिकली आपण डर जाउछंती, चिल्लाउछंती कि पळौछंती पछकू, सेटा सेटा कोन भाभी कि करछंती, भाभी करना, सेटा इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स आपणकर। ठीक सेमती से जहा इनवॉलंटरी स्टेटमेंट की अटरेंस देथिबो, परंतु से देखिला कि जणे मारी देला जनको, कहला हे काई कि तुम एमती कला, से भाभी कि न भाभी कि कहूची सेटा। ओके, इनवॉलंटरी अटरेंसेस, राइट। तो सेटा that you can take down। 6 टा थिला इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन।
ओके तापरे जोड़ा कि मैं कहूली प्रॉक्सिमिटी इन टाइम एंड प्लेस ओके ए टर्म टा मु कहितली प्रॉक्सिमिटी इन टाइम एंड प्लेस तो लिखंतु एटा proximity in time and place. The statement must be made in close temporal and spatial proximity. The statement must be made in close temporal and spatial proximity to the event. The statement must be made in close temporal, temporal means time, and spatial, spatial means space, location. Okay, सेमती आपण कहि परिबे स्पेस माने आपण से यू नो ऊपर स्पेस कथा कहउनंती एठी हम सेटा भी जीव जेतर बट एठी जनरली हमें लोकेशन कथा को कोडी से थिला जे स्टेटमेंट ता दउची ओके क्लोज टेम्पोरल एंड स्पेटियल प्रॉक्सिमिटी टू द इवेंट आउ सबुठु बड़ हैला मोस्ट इंपोर्टेंट जुडिशियल डिस्क्रिशन ओके कोर्ट सेटा डिसाइड जेंति कि एई केस रे मु 3 दिन आगुरु लंडन रे फोन करथिली लंडन ठीक अछि सो एटा एक्चुअली मु जो 3 दिन आगुरु लंडन रे फोन करथिली एटा रेस जेस्टा अंडर रे न गले भी एटा गोटे रेलेवेंट फैक्ट हबो तेनु रेलेवेंट फैक्ट रे एटा पळैबो ठीक अछि कि फोन करा हला तापर मर्डर करा हला ठीक अछि तो दैट विल गो इन दैट रेस जेस्टा अंडर रे मे बी न जाई पारे ओके काई केना जो 3 दिन आगुरु करा हितला राइट बट जुडिशियल डिस्क्रिशन इज आल्सो देयर ओके आमे कोन रेस जेस्टा कोन पे पढु जोटा ओरिजिनली फैक्ट इन इशू नु हो कि रेलेवेंट फैक्ट नु हो ओके सो इट इज not originally a relevant fact or not originally a fact in issue but closely connected to relevant fact or okay fact in issue in itself it is not relevant fact or fact in issue hela connection ଅଛି close connection ଅଛି close connection केमिति रहबो ए characteristics define करूची close connection तो last हला judicial discretion okay so कोर्ट में से दैट ठीक अछि सेटा भी से जो 3 दिन आगु फोन करथिला किंतु सेटा गोटिया ट्रांजैक्शन अंडर रे खाली तापर किछि हेलानी तापर नेक्स्ट स्टेप हला ये जे थिला हिटमैन से बाहरी की मर्डर गला तो 3 दिन आगु हेले भी सेटा सेम ट्रांजैक्शन अंडर रे जीवो जुडिशियल डिस्क्रिशन सो नंबर 9 जुडिशियल डिस्क्रिशन कोर्ट कैन डिसाइड which will come under res gesta which will not come under res gesta हला एगुडा हेला तार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस जेस्टा तापरे नेक्स्ट ओके आउ दीटा जिंस अछि रेस जेस्टा रो कोन ना तार एक्सेप्शंस उडा कोन सब अछि एक्सेप्शंस टू रेस जेस्टा ठीक अछि सेटा हमें देखिबा आउ लैंडमार्क केस लॉ दैट इज इंपोर्टेंट काइना दीटा इंपोर्टेंट लैंडमार्क केस लॉ हमें देखिबा कोठो वी विल सी दैट फ्रॉम इंग्लिश केस लॉ आर वर्सेस बेडिंगफील्ड और आर वर्सेस एंड्रयू सेटा भी देख परिया आउ इंडियन केस लॉ दीटा जोड़ा लैंडमार्क केस लॉ रेस चेष्टा को नेकी दैट आल्सो वी विल सी कौन थिला इश्यूज ऑफ द केस फैक्ट्स कौन थिला सेटा टिके देखिबा ओके तो सेटा इट विल टेक सम टाइम ऑलरेडी 9:21 हेलानी सो विल स्टॉप हियर टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस आपण काम हैला दीटा जिंस करिवे गोटे हैला नंबर 1 से राजनारायण केस ता मते खाली कहबे पढिबे जदी बेस्ट केस लॉटा पढ़ंतु भलरे तार फैक्ट्स ऑफ द केस देखंतु इश्यूज इन्वॉल्व देखंतु जजमेंट तापर देखंतु और जजमेंट पर कथाटा सिटी सरी जाउनी से जजमेंट रो पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस कोन हैला ठीक अछि राजनारायण केस ठीक अछि एटा YouTube रे आराम रे आपन बहुत गुडे मिल जिवो जदी आपन को पढिबा बहुत जण को विजुअल मीडियम भल लागे विजुअल मीडियम रे किंतु गोटे जिंस हैला सब जिंस नथिबो बहुत गुडे जिंस काटी दिते सन ओके आउ सेकंड हैला जो माने जानि नथले ओके लाइबल एंड स्लैंडर तार डिफरेंस ता रेडी करके रखे फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस देन वी विल स्टार्ट ओके आउ जो क्वेश्चन ता कहितली सेटा रेस जेस्टा सरीला परे
ताले सेठी आपनको ओके मते लेखिकी देखेबे सेटा जो एक्सेप्शन रो क्वेश्चन टा कहिसली ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमें क्वेश्चंस करू पांचटा काली रेस जेस्टा सॉरी गले रेस जेस्टा ऊपर पांचटा क्वेश्चंस हमें करिवा एमसीक्यू रो ओके टुडे विल नॉट डू इट बिकॉज़ वी हैव नॉट कंप्लीटेड so we'll complete रेस जेस्टा tomorrow then we'll do the 5 questions on it ठीक है सेमिति कहया गले गोटिए सेक्शन बेसिकली दी लाइन रे कहले सरला गोटे ट्रांजैक्शन रो पार्ट जदी सेटा ओके रहिबो ताले आउ टेंपोरल आउ स्पेटियल कंसीडरेशन रे ताले रेस जेस्टा अंडर सेटा जीवो ठीक है सेति कहले 5 मिनिट्स रे रेस जेस्टा विल फिनिश बट तार कांसेप्ट बिकॉज़ इट इज एन इंपोर्टेंट कांसेप्ट ओके एंदी सबु सेक्शन को हम एते डिटेल रे न एनालाइज करि पारू किंतु जोटा इंपोर्टेंट अछि सेगुडा टिके हमको देखिया पड़े ओके दैट इज व्हाई बिकॉज़ as I told you हम टिके डिटेल एनालिसिस करिया सो दैट एबे रेस जेस्टा पर कोन जा क्वेश्चन पड़ला भी एक्सेप्शन सरी के काली हम देखिया जहां जहां क्वेश्चन भी पड़ला अपन आराम रे कर दो ओके ऑल डायमेंशंस सेटा में देखि सारी थिबा कुछ बेले एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस else we will stop now सर जो कैरेक्टरिस्टिक्स रे जो पॉइंट्स ओडा को कहले हमें याको आउट की एलाबोरेट करबो ना नहीं सेमती जो खाली पॉइंट्स ओडा के ओनली मेंशन कर दो depending on the marks जदि 15 मार्क क्वेश्चन अछि 25 मार्क क्वेश्चन अछि 25 मार्क क्वेश्चन के आसेनी ये रे हमर प्रोसीजरल लॉ रे ठीक है 10-15 मार्क क्वेश्चन थिबो तो 15 मार्क क्वेश्चन अछि ठीक अछि आपण गोटे लाइन लिखि परिबे कोन पचाउछि से जदि खाली लिखि दियो डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस टेस्टा फीचर्स ऑफ रेस टेस्टा ताहले करिम ठीक अछि तो खाली कैरेक्टरिस्टिक पचाउछि तो मु खाली लिखि देली रेस टेस्टा कोन आउ तापर 9टा कैरेक्टरिस्टिक देली कि 7टा 8टा जहां मने पड़ला तापर दीदी लाइन लिखि देली तापर बट जदि 5 मार्क क्वेश्चन देछि 10 मार्क क्वेश्चन देछि किंबा 15 मार्क क्वेश्चन देछि किंतु as one of the parts of the question what is race testa what are the exceptions to race testa give the characteristics of race testa and give the important case laws केते जिंस कहलानी मते 15 मार्क लिखिया तो सब खाली पॉइंट्स लेखा ओके किंतु केतेटा पॉइंट डिस्कस करिया पड़िबो किंतु आपण खाली लिखि दे इमोशनल ओवर पावरिंग कोन से इवैल्यूएटर कोन बुझो इमोशनल ओवर पावरिंग माने कोन एटा हमें काहे कि एते छोटो रे लिखिलु एते एथि पई एटा लिखिलु काहे कि ना हमें तापर वन लाइन एक्सप्लेनेशन टा दबो राइट इमोशनल ओवर पावरिंग खाली लिखि देले कोन हो से तो बुझी ही परिबे नित्रा कोन ओके से पई गोटे लाइन एटलीस्ट लिखि देबा कथा बट एबे दैट इज द थिंग ओके तो सेटा आंसर राइटिंग क्लास रे मु कहबी सपोज समय कम अछि आ एम्ति लिखि देले भी मते बेसी मार्क मिलियन ताले मु कोन करबी मु सेंटेंस टा लिखिबी एटा अलगा लिखिबी तो emotionally statements made when the declarant is emotionally overpowered is considered credible emotionally overpowered good सेती सेंटेंस लिखिली emotionally overpowered ता अंडरलाइन करी बुझि पाले तो मते आउथर इमोशनल ओवरपावरिंग लिखिया दरकार नहीं जदी समय नहीं जो समय अछि तो निहाती भाबरे सब हेडिंग दबा कथा जदी समय नहीं ताले छोटिया गोटे एक्सप्लेनेशन टे लिखिकी से जो टर्म टा जोटी पड़ला ताको अंडरलाइन कर दे तो इट सेव्स मी टाइम ये छोट छोट सब जेतला आपण प्रैक्टिस करबे आंसर लिखिया पई आजी बुट कैंप रो सेकंड डे ठीक अछि तो काली हमें जो माने नुवा थिले आपण जानथिबे मोर स्पीड टा केते हला सो पीपल आर सेइंग मोर 15 कार 13 कार 20 भी थिला ठीक अछि बट 20 टू 25 वर्ड्स पर मिनिट हिसाब रे लिखिया पे पड़िबो तो आजी सेटा 4टा बेले हमें देखिया नेक्स्ट स्टेप टा ओके 4 डेज रे पूरा एंटायर आंसर राइटिंग टा हमें कवर कर दवा ठीक अछि तेनु समय को देखिकी आ मार्क्स को देखिकी आपण एक्सप्लेनेशन देबे कि एक्सप्लेनेशन देबेनी दैट यू हैव टू डिसाइड ओके बुझ पले anyone else any other doubts else we'll stop fine so we'll meet at 4 o'clock okay